Today we are having the workshop on TET, and we have invited Mr. Almeida and his associates to train you on various aspects of teacher eligibility test. Now, he has been training the students for this particular CTET for a long time, and they are experts, and they're going to other B.Ed colleges also to give the training to students. So today is our day. Will be training. आवाज गेला मॅडम तुमचा. हॅलो. हा, येतोय आवाज, येतोय आता. ओके सर, यू कॅन स्टार्ट. ओके, थँक यू. Solid. So good afternoon, everyone. I am very happy to be here with you today to give you some very important insights and some information and prepare you. It's a sort of preparatory online webinar, live webinar on teacher eligibility test and central teacher eligibility test. Now, what we are going to do in next 3 hours is understand why TET and how it will be conducted, and we will see certain part of the syllabus. We will do some practical questions, general questions which are asked. ही मी मराठी हिंदी मध्ये इंग्लिश मध्ये करू की तुम्हाला नुसते इंग्लिश मध्ये पाहिजे, कसं पाहिजे बरं? चालेल, मराठी हिंदी इंग्लिश काही. अच्छा, मराठी मध्ये हो चालेल, मराठी करतो, इंग्लिश आहे ते. इंग्लिश हिंदी चालेल सर. ओके, इंग्लिश हिंदी मध्ये का? चालेल, ठीक हो चालेल. कोणीतरी मला मेसेज पाठवला आहे. इंग्लिश हिंदी, फाइन. तो देखिए, अभी ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने बहुत सुनी है, उसे सुना इसके बारे में, और आपको ये तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर टीचर्स टू पास दिस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंटची टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जे असते, जो रहता है वो CBSE स्कूल्स के लिए वगैरह रहता है, बट महाराष्ट्र में अगर आपको पढ़ाना है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करनी पड़ेगी. अगर आपने D.Ed किया है, B.Ed किया है और ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आप टीचर नहीं बन सकते हो. हाँ, इट इज वेरी नेसेसरी. अभी हाल ही में बहुत सारे टीचर्स को निकाला गया अपने जॉब से, बिकॉज दे कुड नॉट पास दिस एग्जाम. डेडलाइन 2-3 बार दी गई थी, but they could not pass this exam, so their services were terminated. So be very clear that you have got to pass this exam, because this is a mandatory test. That's the requirement. NCTE ने जो नोटिफिकेशन निकाला है 2013 के ऑनवर्ड्स कि टीचर होने के लिए along with B.Ed and D.Ed you need to pass this as the mandatory qualification. मगर ये नहीं है कि आपने TET पास किया तो आपको गवर्नमेंट को आपको जॉब देना ही है. मगर B.Ed or B.Ed, then this test is absolutely required. Now, it's a good idea to start preparation when you are doing your D.Ed or B.Ed, and you know, you can do it in a relaxed manner. You can prepare for the TET while the contents are going up. So ongoing basis पे ये preparation आप कर सकते हो, जिसका तुम्हें बहुत फायदा होगा. क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत बार ये होता है कि प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं, मगर बहुत गैप हुआ होता है आफ्टर 5 years 6 years, और जो सवाल पूछते हैं वो तुम्हारे B.Ed के कोर सिलेबस पे रहता है. ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस आर ऑन व्हाट यू टीच, बट सवाल रहते हैं पेडागोजी पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे, इस पे सवाल रहते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है. तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गांधी शिक्षण भवन को. प्रिंसिपल मैडम तो नहीं है, मगर वैशाली धावरे मैडम हैज ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, सो आई थैंक देम ऑल एंड लेट्स स्टार्ट. सो मैंने पहले ही कहा कि ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है. मेरा स्क्रीन आप देख रहे हो ना, आपको दिखाई दे रहा होगा जो स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ. आई एम क्वाइट श्योर द PPT इज विजिबल. अभी देखिए, इफ यू आर नाउ मोस्ट ऑफ यू आर B.Ed, सो अगर आप 1st to 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाना चाहते हो, 1st to 8th स्टैंडर्ड तक, तो ये जरूरी हो जाता है कि
आपके लिए ये टीटी जरूरी है। अभी डीएड होंगे तो 1st to 5th तक आप पढ़ा सकते हो, और वहां भी जो टेस्ट है उसका भी स्ट्रक्चर आप 1 मिनट में जान लीजिए। देखिए ये 150 क्वेश्चंस रहेंगे और एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहता है, मराठी में रहता है, हिंदी में और उर्दू में भी रहता है। इस पे जो सिलेबस है, इफ यू लुक एट द सिलेबस, तुम्हें समझ में आएगा कि उन्हें एक ऐसा टीचर चाहिए जो सब्जेक्ट कंटेंट में भी अच्छा हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी उसके अच्छे हो, उसको जो रोल अदा करना है, द रोल इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उसके बारे में क्लैरिटी हो, एंड ही हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट टीचर, अ कमिटेड टीचर। नाउ यू माइट आस्क कि भाई हमने तुम्हारी सीईटी पास की, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद एडमिशन दिया, आपने हमें 2 साल पढ़ाया, और स्टिल वी आर नॉट एलिजिबल टू टीच। बट दैट इज व्हाट इट इज, दे हैव नेटेड सेट, उसी तरह की टेस्ट रखी है। बट यू कांट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, दिस इज अपहेल्ड बाय द कोर्ट, सो तुम्हें ये एग्जाम देना कंपलसरी है। तो ये एक सवाल आ जाता है कि भाई हमने इतना सब करने के बाद भी हम पढ़ाने के लिए काबिल कैसे नहीं समझे जाते, तो ये टेस्ट क्यों दे? क्या 150 एमसीक्यू से पता चलेगा कि हम कॉम्पिटेंट टीचर है या नहीं? ये बात सही है कि जिनको 5, 6, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो भी शायद ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, होता है ऐसे। बट यू हैव गॉट टू प्रिपेयर, और इट्स अ गुड आइडिया दैट व्हाइल यू आर कंप्लीटिंग योर बीएड यू आर डूइंग दिस। सो सवाल कैसे रहते हैं, देखो, अगर आपने बीएड पेपर 1 देना है, आप दोनों पेपर दे सकते हो, जैसे आप बीएड हो, पेपर 1 भी दे सकते हो, पेपर 2 भी दे सकते हो। पेपर 1 जो है वो 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए है, और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड तक के लिए है। अभी क्या सिलेबस है इसका? तुम्हें 30 एमसीक्यूज आएंगे पेपर 1 में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे, बाल मानस शास्त्र और पढ़ाने की जो पद्धतियां है, पेडागोजी है, इस पे आ जाएंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इंग्लिश और मराठी जनरली आपके रहेगी, उस पे सवाल आएंगे 30 मार्क्स के। और इसमें क्या कंटेंट रहता है, वी विल सी द एक्चुअल क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और किस पे व्हाइल डूइंग योर बीएड तुम्हें फोकस करना है। वो लैंग्वेज 2 जो रहेगी, लैंग्वेज 1 तो तुम्हारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और लैंग्वेज 2 जनरली इंग्लिश रहेगी। देन देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स। अभी देखो ये डीएड के लिए मैं कह रहा हूँ, 1st to 5th के लिए कह रहा हूँ। सो मैथ्स पे सवाल रहेंगे, जनरली आउट ऑफ 30, 10-12 क्वेश्चंस पेडागोजी पे रहेंगे, और रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी ऑन द कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर पे रहेंगे। देन एनवायरमेंटल स्टडीज पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सो लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, मैथमेटिक्स हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, उसके ऊपर कम से कम एवरी पेपर में 10 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द सीटीटी नाउ, कि वो पेडागोजी पे रहेंगे, वो सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ाओगे, एंड देन कंटेंट पे सवाल रहेंगे। ये हुआ तुम्हारे पेपर 1 के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, मगर उसमें एक टाई क्या है, देखो एक प्रॉब्लम ये है कि आपको पासिंग, जैसे हम आउट ऑफ 135 के हमें आदत रहती है, वैसे नहीं है। यू नीड टू गेट क्लियर 60%, दैट इज 90 मार्क्स out of 150, 90 marks you need to get, then only you clear. Of course, for reserve categories, there it is 5% less, it is 55% and all. But तुम्हारा benchmark रहता है कि तुम्हें 60% की तैयारी करनी चाहिए. Now, thankfully, there is no negative marking. Earlier there was negative marking, 0.25% negative होता, 4 गलत हो गया, 5वां भी गया. But thankfully ये नहीं है. अभी आप जो एग्जाम दोगे, the exam that as B.Ed candidates you will be giving, that is for paper 2, classes कौन से 6 to 8 को जब आप पढ़ाओगे, as of now 9th और 10th के लिए TET CTET नहीं है। If you want to teach from 1st to 8th standard, तुम्हें ये एग्जाम देनी पड़ेगी। 9th 10th तो तुम्हें क्या सिलेबस रहेगा पेपर 2 के लिए जो तुम देने वाले हो? 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, दैट मीन्स 150 मिनट्स, 150 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग, एमसीक्यूज, कुछ लिखना नहीं है। पेपर एंड पेंसिल तो अभी नहीं रहती, अभी वो ऑनलाइन ही किया है उन्होंने, और उसमें भी सिमिलर सिलेबस है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे 30 कंपल्सरी सवाल रहेंगे, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 जो तुम्हारी शायद मराठी होगी, हिंदी होगी, जो भी कुछ है, उस पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मैंने कहा 10 मार्क्स विल बी ऑन द पेडागोजी, हाउ यू विल टीच मराठी जो मेथड्स है वो कैसे रहेंगे, ऑल दोस थिंग, असेसमेंट कैसे करोगे, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, लैंग्वेज माइंड, वो जो भी कुछ उसका सेट कंटेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल पॉइंट्स। लैंग्वेज 2 में भी कंटेंट पे क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चंस विल बी ऑन द पेडागोजी। एंड देन
आप में से कुछ बच्चे बीएससी वाले रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे सोशल स्टडीज ह्यूमैनिटीज के साइड के। तो मैथ्स एंड साइंस जिनके मेथड्स है उनको 60 मार्क्स आएंगे मैथ्स एंड साइंस पे, और दूसरे जो भी कुछ है उनको सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंसेस पे रहेंगे, ज्योग्राफी है, तुम्हारा हिस्ट्री है, जो भी कुछ है उस पे 60 क्वेश्चंस रहेंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कंपल्सरी है। देखिए, यू हैव डन योर बीएससी, यू आर गोइंग टू टीच मैथ, यू आर गोइंग टू टीच साइंस, बट इवन देन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपल्सरी। वहां भी यू आर नॉट गोइंग टू टीच लैंग्वेज, तो भी पेडागोजी के सवाल आपको करने पड़ेंगे। दैट्स स्ट्रक्चर। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमें कहाँ लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो भी मैं ये क्यों करूँ, मुझे मैथ्स और या सोशल साइंसेस के 60 के बजाय और भी 30 सवाल पूछो। नो, दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर दे हैव इवॉल्व्ड, दे हैव देयर ओन रैशनल। सो 90 मार्क्स के क्वेश्चन कॉमन रहेंगे, और 60 मार्क्स के, अगर आप साइंस के हो तो आपको मैथ साइंस के सवाल रहेंगे, सोशल साइंसेस के हो, सोशल स्टडीज, उस पे 60 क्वेश्चन रहेंगे। सो 1 क्वेश्चन 150 हो गए, पासिंग अगेन 90%, 60%, दैट इज 90 मार्क्स। बहुत सारे आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स 85 86 तक जाते हैं, और 4-5 मार्क्स में उनका प्रॉब्लम होता है। If you prepare thoroughly, please understand, cracking this exam is not difficult. But as I said, if you are trying to prepare after your B.Ed and all, then it becomes a difficulty. While you are studying the content, it's a good idea to prepare. You can keep those questions in mind, and you can start your preparation. We will see some questions, you will understand, don't worry. अभी कौन से किताब, lot of students keep asking, sir कौन से किताबें पढ़े? I will strongly recommend you to read your own D.Ed and B.Ed books. बहुत अच्छा होगा अगर आप, कैसे करते हैं जनरली, B.Ed होने के बाद सब नोट्स आप किसी को दे देते हो या डिस्कार्ड करते हो, गो थ्रू योर ओन नोट्स, वो कोर मटेरियल है तुम्हारा, क्योंकि देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन लेसन प्लानिंग से लेके, एक अच्छा टीचर उनको चाहिए, तो तुम्हारा जो B.Ed का सिलेबस है, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ इट। Then there are some very good periodicals like शिक्षण संक्रमण, you will get it, you can take a snap of this. शिक्षण संक्रमण ये अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पब्लिकेशन है, मंथली है, ओल्ड इश्यूज आर अवेलेबल। उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज, पेडागोजी, प्रॉब्लम्स, टीचर्स के प्रॉब्लम, बच्चों के प्रॉब्लम, ये सब डिस्कस किए हैं। सो कंटिन्यूअसली उस पर डिस्कशन चलता है। सो एक अच्छा बैकग्राउंड तुम्हें उसमें मिलेगा। जैसे सीबीएसई के वेबसाइट पे आप जाओगे तो सीबीएसई का भी पीरियोडिकल मिलेगा, जनरल मिलेगा, बहुत अच्छा जनरल है, वो आप पढ़ोगे तो तुम अच्छी तरह से अपडेट हो जाओगे। मैंने उसके बारे में आगे बोला है। बाद में ई बाल भारती, प्लीज अंडरस्टैंड, सिलेबस में उन्होंने कहा है कि आप 1st to 8th तक पढ़ाओगे, बट वी में आस्क क्वेश्चंस टिल 10th and 12th also. बट जनरली अभी तक मैंने देखा है कि 12, 11, 12 के सवाल पूछे नहीं गए, 9, 10 तक के कुछ सवाल आए हैं। तो ये किताबें कहाँ मिलेगी आपको? ई बाल भारती पे अगर आप गए, ऑल बुक्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड। हाँ, पीडीएफ में पूरे किताबें आपको मिल जाएगी। डीएड एंड बीएड के बुक्स पढ़ो, मैंने पहले ही कहा है ना। तो शिक्षण क्रांति एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, वहां बहुत सारे पास क्वेश्चन पेपर्स, करंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए हैं, हाँ, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन। तो कुछ सवाल जैसे पूछे जाते हैं, सो यू विल बी इन प्रॉपरली टच में रहोगे। ये एक रिसोर्स आप स्नैपशॉट लेके रखिए। अभी ये महाराष्ट्र के लिए अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए। अगर आप केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हो, आईसीएसई में वगैरह, तो जे जनरली प्रीफर सिटी, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप सीटीईटी भी दीजिए, आप टीईटी भी दीजिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र टीईटी का पैटर्न है सिलेबस का, वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अनुसार ही है, एग्जैक्टली उसका कॉपी। थोड़ा सीटीईटी का लेवल इज लिटिल, यू कैन से लिटिल हायर, और रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र टीईटी में 10 सवाल गलत निकले, 15 सवाल गलत निकले वगैरह वगैरह, ऐसा जनरली वहां नहीं होता है। सो यू कैन गेट अ प्रॉपर बेंचमार्क। तो अगर आप महाराष्ट्र टीईटी भी कर रहे हो तो सीटीईटी का जरा किताब 1-2 नजर मारो तो अच्छा है। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप, बाजार में बहुत सारी किताबें मिलती है, देयर इज अ फ्लड ऑफ बुक्स। फर्स्ट रीड योर टेक्स्ट बुक्स, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। एनसीईआरटी के नोट्स अगर आप पढ़ते हो, एनसीटी आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाओगे तो सीबीएसई के बहुत सारी किताबें मटेरियल मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड दिस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब डाउनलोड कर सकते हो। हैंडबुक्स है, जैसे देखो एक अच्छा रिसोर्स मैं तुम्हें बताता हूँ जो जनरली बच्चों के, स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं रहता है,
कि एवरी टेक्स्ट बुक पढ़ाने का हैंडबुक वगैरह आते हैं, वो हैंडबुक तुम्हें cbseacademic.nic.in पे मिलेंगे। आई सी रिसेंटली 4-5 एग्जाम में बहुत सारे सवाल ये किताबों से मेरे आए, because these are the very nice guidelines exactly how to teach. Then CBSE जर्नल, जैसे मैंने कहा, जैसे शिक्षण क्रांति है महाराष्ट्र बोर्ड का, वैसे CBSE एकेडमिक पे अगर आप जाओगे तो CBSE का जर्नल मिलेगा। आई टेल यू, एक 4 साल पहले उस जर्नल में सवाल मुझे डिस्कशन था लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर, और उस डिस्कशन अगर जिसने पढ़ा होगा वो लर्निंग डिसेबिलिटी के 5 ही 5 सवाल सॉल्व कर पाता। मैं बताता हूँ आपको, सिलेबस तक आऊंगा तभी बताता हूँ। सो ये एक जनरल रिसोर्स आप अपडेट करके रखो। अभी सिलेबस में क्या पूछेंगे, देखिए, व्हेन वी से दैट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पहले उसको चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी बोलते थे। सो यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, कैन यू टीच समवन अनलेस यू नो योर लर्नर? You cannot teach anything to anyone unless you understand your learner completely, physically, mentally, emotionally, intellectually, because there is a concept of learner readiness. बराबर, आप you are a great teacher, but before your learner has to be ready to learn. अगर वो emotionally disturbed है, उसके कुछ intellectual issues है या barriers है या disabilities है, you need to understand, and according to his learning needs you will try to teach. You will design your teaching aids, learning aids, your lesson plan and everything. That's why we call learner-centered teaching. Now, teacher is not a sage on the stage. He is guided by sight. Correct, no? एक अच्छा टीचर किसको कहते हैं? जो क्लासरूम में एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करेगा। करेक्ट? और लर्निंग प्रोसेस के लिए you collaborate with the learner. हम अभी कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज करते हैं, ज्ञान रचनावाद जिसको कहते हैं, कि that learner has to construct his or her own knowledge, and your role is to help the learner discover the knowledge, discover his own learning and construct his own knowledge. So ये जनरल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो दौर है, so टीचर का रोल क्लासरूम में थोड़ा चेंज हो गया है। वो पहले पंतोजी सिस्टम थी, मैं बताता हूँ तुम लिख लो, नहीं, you have to collaborate with the learner, you are guided by sight, you have to create a positive learning environment, and if he is failing to learn, you help, but let the child use his own brain, and brain based education हम जिसको कहते हैं. So it is very essential to understand that teacher's role is not the giver but sharing रह गया है, and to enable the environment that the learner will learn on his own. Now we, in constructivism, we try to focus that the learner becomes autonomous, confident, self-learner. अभी ये कोरोना में सब disrupt हो गया, online learning में there were demands on the learner that the learner will learn on his own. So advanced learning skills जो sadly नहीं थे, language deficit था, इसलिए cognitive deficit हो गया, इसलिए learning deficit हो गया. But keeping all these things in mind, what is ultimately we want to achieve, that the learner will learn on his own. तो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो इमोशनली सिक्योर है, अगर बच्चे बोलने के लिए, गलती करने के लिए डरते हैं, then they may not learn properly. So when you say that I am trying to understand my learner, you are trying to understand his strengths and weaknesses, background, सब, उसकी लैंग्वेज कैसी है, इजी लर्नेबल वगैरह, जो भी कुछ बातें आप ध्यान में रखते हो। ये सब करने के बाद एक सवाल आता है कि टीचर को किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ये सवाल सीईटी में भी पूछा गया था, बीएड सीईटी में, फर्स्ट बीएड सीईटी में, कि टीचर को तुम किसके साथ कंपेयर करोगे। कोई जवाब देगा मुझे? कैन एनीवन आंसर? विथ हुम यू कैन आंसर इट इन योर चैट बॉक्स में। बोलिए कि टीचर को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्कल्प्टर के साथ, मूर्ति बनाने वाला आर्किटेक्ट के साथ, पेंटर के साथ, या पॉटर के साथ? तुम्हें क्या लगता है, टीचर को तुम किसके साथ कंपेयर करोगे? कैन एनीवन टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स, और बोलिए या अनम्यूट करके बोलिए। जनरली हम क्या सोचते हैं कि मूर्ति बनाता है टीचर, टीचर आर्किटेक्ट रहता है, वगैरह वगैरह। कैन एनीवन टेल मी? यू कैन अनम्यूट, अपना माइक शुरू करके आप आंसर दे दीजिए, या अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। किसी ने तो आंसर दिया है, मैं देखता हूँ। स्कल्प्टर के साथ दिया है। ओके, वैशाली सेज दैट स्कल्प्टर, बट लेट मी टेल यू द राइट आंसर इज पॉटर। व्हाई सो? प्लीज अंडरस्टैंड, स्कल्प्टर क्या करता है, सर्टन टाइप का स्टोन चाहिए और उसके आइडिया उस पर इम्पोज करता है कि ऐसा रहेगा तो नहीं बनेगा इससे। आर्किटेक्ट है, पेंटर है, मगर पॉटर क्या करता है कि अनकंडीशनली वेलकम्स द चाइल्ड। जैसे मट्टी है उसमें से मैं कुछ तो बना पाऊंगा। ही हैज द confidence as a trained teacher that he can fashion out something useful in that.
अनकंडीशनली बच्चों को एक्सेप्ट करता है एंड ट्राइज टू create something beautiful out of. So Potter answer हो जाएगा. Now please understand here, you need to understand certain concepts. कि हमारे यहाँ education कैसे शुरू हो गया? Education started with spiritual instruction generally. Then in ancient times we had Gurukul system, but the focus was on material, integrated, holistic view था हमारा. वो दौर था. Then we had in the Middle Ages we had our traditional system of alutedari, balutedari, and madrasa system and all these things. That's a traditional education. Modern education came to India when the British came to India. And the formal education system, syllabus hai, exam hai, diploma hai, degree hai, and all these things. Cambridge University ko almost 800 years ho gaye. They were offering MA and doctorate and all that time. So they had an organized system because they had industrial revolution and they needed specific skills people. So they had formal structure of education. When the British came to India, they exploited India. They taught us to help them exploit India. They trained us to become clerks. You get the point? So that we will assist them to loot India, loot and take India. That is what was the problem. After independence, but before independence, you will see that all our freedom fighters were basically educationists. Vivekananda लीजिए, the manifestation of divinity within. Dondo Keshav Karve लीजिए, Jyotiba Phule लीजिए. Jyotiba Phule talked about, demanded free and compulsory primary education. वो 80s में 1885 के दौर में पूछा था. Now we have made it compulsory right now. We will talk about it. वो free and compulsory education, right to education वगैरह अभी बना दिया हमने 14 साल तक. But he had the vision to do it. अभी जैसे सवाल आया है कि who was the first trained lady teacher from India? कौन है? किसको मालूम है? सावित्रीबाई फुले. That was the first train, जिसको हम क्रांति ज्योति कहते हैं और सम्मान से कहते हैं. और एंड उनका जन्मदिन जो है वो बालिका दिन के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं. ये सवाल पूछे गए हैं टीईटी में. सो टीचर का रोल कैसे इवॉल्व हो गया है? These freedom fighters understood that if you want to develop this country on modern lines, education will have to play a huge role. So before freedom, we have Swadeshi education and all those things. And after independence, education was a critical input. Then you need to know, you must have studied sociology of education and all, university commission, जो राधाकृष्णन कमीशन था. Then secondary commission, मुदलियार कमीशन था. Then तुम्हारा कोठारी कमीशन 66 के दौर का 10+2+3 वाला. हाँ, ये कमीशन कैसे इवॉल्व हो गए हैं राइट अप टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल चेंजेस हो गए हैं. जो ढांचा था हमारा 10+2+3, दैट हैज बीन रिवाइज्ड. नाउ इट इज 5+3+3+4. ऐसे हुआ है ना. दिस क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. बी क्वाइट श्योर कि आपको कम से कम 2 या 3 सवाल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आएंगे. एनईपी 2020 पे उसके हाइलाइट्स पढ़ो. You are teacher, that is what you are actually implementing that. So you are expected to know. So 1-2 सवाल उस पे आएंगे. So how the teacher's role has evolved over the period. कि British left India, we needed people to administer the country. तो primary education पे थोड़ा हमने ध्यान कम दिया और we wanted officers and also university engineers, managers. यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया. देन सेकेंडरी एजुकेशन आ गया. देन तुम्हारा कोठारी कमीशन. वी हैड प्रॉब्लम्स एंड अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो राममूर्ति कमीशन आ गया बीच में. देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1995 की वगैरह जो है. तो कैसे एजुकेशन इवॉल्व हो गया है और मेन एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन एक 4-5 पेज का इंफॉर्मेशन है. वो करोगे तो यू कैन बी श्योर कि 2-3 मार्क्स का काम हो जाएगा. जनरली यू कैन एक्सपेक्ट, इफ यू सी द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, I will call on you all to see the past question papers and आपको पता चलेगा they're asked about how the education has evolved before independence, post independence, and in present situation. Because education is, what is education? A is educated, B is not educated. What is the difference? The one who is educated can respond to changing situation. बदलत्या परिस्थितीला प्रतिसाद देण्याची क्षमता निर्माण करते ते शिक्षण. असं आपण जनरली शिक्षणाची व्याख्या करतो. अनेक व्याख्या आहेत, बहुत सारे डेफिनेशंस आहेत. बट इट इज व्हेरी इंपॉर्टंट टू अंडरस्टँड व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एजुकेशन. वी हैव अ सर्टेन विजन, नो. सो व्हेन वी स्टार्टेड एज अ कंट्री, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने, तो वो प्रियम्बल जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure every citizen justice, social, economic, political, blah blah, जो भी कुछ है. The preamble is the
द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक विजन है कंट्री को ऐसे ऐसे बनाएंगे, हमने फ्रीडम क्यों लिया और क्या हम अचीव करना चाहते हैं। दैट मैंडेट इज टू द टीचर। दैट्स व्हाई टीचर इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रेट विजन है उसको अचीव क्लासरूम में करना है, क्योंकि नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट, क्लासरूम में करना है, क्योंकि तुम्हारा क्लासरूम इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द सोसाइटी, बराबर ना। लघु रूप है, समाज का एक छोटा रूप है, और वही आगे जाके समाज में। सो एज अ टीचर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इज योर रोल। सो टीचर एटीट्यूड एंड टीचर एप्टीट्यूड, ये दोनों बातें होनी चाहिए। सो आप बीएड में टीचर एटीट्यूड एप्टीट्यूड पे सवाल दिए रहेंगे की शिक्षक आवडला तरच त्याचा विषय आवडतो, बरोबर ना। अगर बच्चों को टीचर अच्छा लगे तो ही उसका सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, वो हमारा भी एक्सपीरियंस रहता है। सो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज। एक पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, एक इंजीनियर ठीक नहीं है, मैनेजर ठीक नहीं है, इतना लॉस नहीं हो जाएगा, we can recover that. But if a teacher is not the right and he is not happy, is not doing his work, then वो समाज को डैमेज करेगा। So a certain teacher attitude and aptitude चाहिए। हम कहते हैं ना, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, जैसे सृष्टि वैसे दृष्टि। हाँ, जैसे हमारा नजरिया रहता है वैसे हमें दुनिया दिखती है। How you look at yourself? Do you understand your constitutional role, your social role, your economic role? So you are an instrument of constitution. You have to recreate a new country. You have to mold future citizens. So who are the stakeholders in the education system? First is the Constitution of India, कि उनको एक Constitution की जो vision है, primary stakeholder. Nothing can go against the spirit of the Constitution. You cannot use textbook to propagate your political philosophy. That will be ultra virus to the Constitution. So Constitution के value system है, उसके अनुसार एक अच्छा citizen हमें बनाना है। We have to build the country. Constitution is the stakeholder. Then Government of India. Government of India को क्या चाहिए भाई, एक responsible citizen। Then दूसरा stakeholder कौन है, फैमिली है। फैमिली को चाहिए भाई एक सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, अपने पैसे कमाए, अपने बलबूते पे खड़ा रहे, ऐसे एक आदमी बना दो। इसलिए हम स्कूल में भेजा है। स्कूल इज द स्टेक होल्डर। स्कूल को क्या चाहिए भाई, एक गुड स्टूडेंट चाहिए जो एक सिटीजन में फैशन आउट करेंगे, आउटपुट प्रोडक्ट वो रहेगा। देन पेरेंट्स है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, इमीडिएटली फैमिली तो चाहती है, पेरेंट्स चाहते हैं भाई अपने पैसे पे खड़ा रहे, तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए, अपने यू कंडक्ट योर ओन लाइफ। And the most important stakeholder is the learner himself. The child center बोलते हैं ना हम एजुकेशन, learner himself. And that learner की क्या expectation रहेगी, the real stakeholder, कि I have some potential, I come to the school with that potential, let something good happen to me. ये जनरली एजुकेशन सिस्टम, जितना स्कूल और फैमिली नजदीक आएंगे उतना बच्चा ऊपर जाएगा। यू कैन थिंक ऑफ अ ट्राइंगल, ऊपर बच्चा है और फाउंडेशन पे स्कूल है और फैमिली। स्कूल और फैमिली जितने नजदीक आएंगे बच्चा ऊपर जाएगा, जितने वो दूर जाएंगे बच्चा नीचे जाएगा। और सिर्फ कोलैबोरेशन बिटवीन फैमिली। दैट्स व्हाई सवाल आता है कि विच इज द फर्स्ट इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज फैमिली, नॉट द स्कूल। स्कूल बाद में आता है। सो फैमिली स्कूल रेडी करके बच्चों को भेज सकता है। So that's the advantage family can give. Now we have to understand कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ऐसा ऐसा कंट्री बनाना है जहां भेदभाव नहीं होगा, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होगी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह। मगर दैट हैज टू बी अचीव्ड इन द स्कूल। इफ वी फेल इन द स्कूल वी कैन नेवर सक्सीड एनीवेयर। ये अभी सबको पता चला है कि इफ वी एज अ कंट्री फेल इन द स्कूल वी कैन नेवर सक्सीड एनीवेयर। You get the point. So when it comes to teacher, if not you then who, if not here then where, if not now then when, as simple as that. So teacher की एक अहमियत है, एक certain role is expected. That's why teacher is unconditionally welcome. Now we have the concept of inclusive education. 5 questions आएंगे आपको inclusive education पे। learning disability आपको मालूम रहेगा, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, we will see some questions. So I'm just telling you the background, what is generally expected. ये टेस्ट क्या करना चाहते हैं, what is expected out of it. That you need to be aware of your own role. You need to have a proper attitude. If you don't have attitude, तो तुम्हारा aptitude का कुछ फायदा नहीं हो जाएगा. So your role is different. You are not another professional. It is not just occupation. It's your vocation also. There's a difference between the two. So एक बात वो पता चले कि भाई बच्चा कैसे भी हो, लर्निंग डिसेबल हो, डिफिकल्टी हो, मेंटली रिटार्डेड हो, वी हैव इंक्लूसिव क्लासरूम। अपनी फिलोसफी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। Every child must get an opportunity as the citizen of the country because it is the constitutional responsibility. We are a welfare state.
लोकांचं कल्याणकारी राज्य आहे, लोकांचं कल्याण करायची जबाबदारी आपली आहे. त्यामुळे we have made education, primary education till the age of 14 a fundamental right. तो फिर सवाल आता है, पहले क्या था? पहले वो लीगल राइट था, भाई मुझे पढ़ना है, मैं आई कैन पे योर फीस, यू कैन नॉट से नो टू मी. बट नाउ फंडामेंटल राइट हो गया. इस पे बहुत सवाल आए हैं. टिल द एज ऑफ 14, 16 14 साल तक एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया. मतलब क्या हो गया? इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द चाइल्ड इज. नहीं हो तो फंडामेंटल राइट्स अगर गवर्नमेंट ब्रेक करता है तो गवर्नमेंट हैज टू गो. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड. फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है. तो एवरी चाइल्ड हैज राइट टू लर्न. अभी गवर्नमेंट ने 14 साल तक पढ़ाएंगे, बाद में हाथ ऊपर किए, वो बात अलग है. बट टिल द एज ऑफ 14 एवरी चाइल्ड हैज राइट not to work anywhere but right to be in the school. इसलिए टीचर जाते हैं ना, बच्चे कहाँ गए, 14 साल के स्कूल में होने चाहिए, ढूंढते फिरते हो, because that's the fundamental right. No, not even parents can take it away. If parents are making the children work in hotel, they can be arrested, they can be punished. The law is very clear about it. So inclusive classroom, कोई भी बच्चा कैसे भी हो unconditionally accept करेंगे. As trained teachers we will try to do something. That's why we compare the teacher with the porter. So एक सवाल आया तो एक basic concept, एक थोड़ा background हमारे समझ में आता है. You get the point. So understand that you have a certain role to play in the whole thing, the kind of India that is emerging and that we want to make. हमें कैसा भी इंडिया नहीं चाहिए, हमें जो इंडिया बनाना है उसकी विजन एंड मिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में. So that is what we have to adhere to and follow strictly. Then education is the manifestation of divinity within us. Who said this? I just said Swami Vivekananda. Now इफ यू डू नेट के लिए अगर आप जाते हो कुछ अच्छे एग्जाम के लिए, तो आपको एजुकेशनल थिंकर्स मालूम होना चाहिए. अरबिंदो, ग्रेट एजुकेशनल थिंकर. गांधी, नई तालीम, ही हैड हिज ओन विजन. दैट्स व्हाई वी हैव प्रैक्टिकल. एंड टैगोर की विजन थी नेचुरलिस्ट. स्कूल्स में वॉल्स नहीं होने चाहिए, नेचर के साथ होना चाहिए. एजुकेशन इज एन एडवेंचर ऑफ लाइफ वगैरह, ये टाइप का उनका कंसेप्ट था. कर्वे, धोंडो केशव कर्वे की एक विजन थी. विधवा एजुकेशन, women education. Then we had Nehru's vision. So we had all the freedom fighters. They understood that if you want to build this country rightly, you need education, and they had their own thinking. But they were all most of our freedom fighters were educational thinkers, और उनका बड़ा impact education policy पे हुआ है. You get the point. Tagore has influence cultural वगैरह activities. So lot of this education policy is formed because of the impact of this great education thinker. तो उनके education thinking क्या थी, उसके बारे में एक 4-5 पेज का information अगर आपको रहेगा, then you will be able to solve at least 2 or 3 questions. That is what it is. Then look at this question. NAC stands for. NAC का मतलब क्या है? I'll just take this away. NAC का मतलब क्या है? Now, National Assessment and Association Council, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. अभी देयर विल बी फुल फॉर्म. यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी क्या है, कब हो गए, यूजीसी का रोल क्या है, हायर एजुकेशन का ढांचा कैसे है, हाउ इज द व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन. अभी जो चेंजेस हुए हैं, यू नो मैसिव चेंजेस हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद. पॉलिसी में 2020 के बाद अभी जो इम्प्लीमेंट हो रही है, बोर्ड का इंपॉर्टेंस कम कर दिया. वो क्यों किया है, क्या अचीव करना है हमें? As teachers, we are expected to know, because that is what directly connected to you. You are actually implementing. So national policy बनाइए वहां पे, मगर स्कूल में तुम इम्प्लीमेंट करने वाले. So you are expected to know. वो जानना चाहेंगे कि आपको एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस हुए आपको मालूम है या नहीं ना. AICT क्या है, AIU क्या है, NCERT क्या है, टीचर एजुकेशन में क्या चेंजेस है, क्यों चेंजेस आ गए. So national assessment and कोई जवाब देगा? Can anyone type it in your chat box कि भाई NAC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. एंड नेक्स्ट एक्शन अगेंस्ट करप्शन, नेशनल एक्शन. नो, आई थिंक योर बी विल बी द बेटर आंसर. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वो स्कूल के लिए सैक पे रहता है ना, ये स्टेट लेवल का. टुडेज एजुकेशन इज, कैसा है आज का एजुकेशन? मैंने बोलते बोलते बोल दिया कि वो लर्नर सेंटर्ड है. टीचर इज अ गाइड बाय साइड, लर्नर सेंटर है. लर्निंग प्रोसेस बच्चे के हाथ में दी है कि भाई वी विल हेल्प यू, बट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर ओन नॉलेज. एंड वी बिलीव दैट लर्नर कैन लर्न ऑन हिज ओन, और टीचिंग में उसके मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट लेनी है. सो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए. टीचर इज नॉट जस्ट डाउनलोडिंग. टीचर, learner is an active participant in the teaching learning process.
अगर लर्निंग नहीं हो रहा है तो टीचिंग के बारे में बोल के कुछ फायदा नहीं है। सो लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर, ये आज का एजुकेशन सिस्टम है। ऑलवेज इफ यू टेक एनी टेक्स्ट बुक एंड रीड द प्रीफेस ऑफ दैट, यू विल गेट दिस आइडिया कि भाई जो भी कुछ आगे है उसकी फिलोसफी क्या है। इट्स अ गुड आइडिया, दैट्स व्हाई आई सेड शिक्षण क्रांति, वो सीबीएसई का, उसमें ये डिस्कशन हमेशा रहता है। सो व्हाट इज हैपनिंग सिलेबस, यू आर इन वेरी मच इन टच एंड योर टीचिंग विल बी इन्फॉर्म्ड बाय दैट, सो you know your quality will definitely improve. India's first 10 lady teacher whose birthday 3rd January is celebrated as Girl Child Day, ना बालिका दिन। जब भी मैंने कहा कि सावित्रीबाई फुले, she was the first trained lady teacher in India. A sign of motivated teaching. Now please understand, there are questions on child development and pedagogy, but these questions are, you know, are related to your teaching attitude and your aptitude also. Do you understand what is teaching? बता देना ये टीचिंग है, या बताने के बाद, दिखाने के बाद असेसमेंट करना, why you do assessment, why, what is the purpose of evaluation. So ये जो बेसिक कंसेप्ट्स है अगर आपको मालूम रहेंगे, then related points आप आराम से, there will be 1 or 2 questions definitely in child development and pedagogy में assessment पे रहेंगे, evaluation assessment पे रहेंगे, objective assessment का purpose क्या है, हाँ, this type of questions. तो motivated teaching का साइन क्या है? What do you think? Maximum attendance in the class. Now motivated learning नहीं पूछा है, you need to understand the question very clearly. What is the sign of motivated teaching? Remedial work given by the teacher, questioning by students, या pin drop silence. अगर कोई टीचर क्लास में तभी सक्सेसफुल होता है जब बच्चे उनको सवाल पूछते हैं. When children ask questions, that means they are involved. एक इंक्लूसिव क्लासरूम तैयार हो गया. इंक्लूसिव क्लासरूम डजंट मीन दैट यू हैव चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स और सबको लर्निंग का अपॉर्चुनिटी दिया है. अभी स्पेशल स्कूल को थोड़ा सा बाजू में रखे, दोज हु हैव लर्निंग डिसेबिलिटी आर टू बी टॉट विद नॉर्मल स्टूडेंट, वो सब दौर चल रहा है. बट दैट your learner are also part of it. They ask questions, encourage them to ask questions, use their curiosity in teaching, and that is how they will construct knowledge. Don't give your children the structure of the cell, let them find it out. If they are making mistake, then chip in and tell them, but your role is to help learning happen in the classroom. That is what it is. That is very, very important. Now अगर ये सवाल आ गया कि motivated learning का साइन क्या है, then naturally that children are curious, they are asking questions, they are interacting. They are not passive receivers, they have to be active learners. And to make them active, say for example you are teaching Pythagoras, and if you know in the beginning say it's a very tough topic and all those things, and generally math के बारे में fright रहती है, but if you make it enjoyable, if you make the use of classroom, राजू तू इधर खड़ा रहे, संजू तू इधर खड़ा रहे, गीता तू इधर खड़ी रहे, ये दो साइड मालूम रहेंगे ना, तो हम ये साइड मैं तुम्हें बता पाता हूँ. Let's try to do it. If you do that, then math will become enjoyable. Education is essentially an enjoyable activity, and as Rolf says, the secret of education is to respect the child, that the child can learn on his her own. So motivated teaching का एक टीचर के सक्सेस का एक डिस्टिंक्टिव फीचर रहेगा कि बच्चे उसको सवाल पूछते हैं. So a good teacher is considered the one whom the students ask questions to know more and more and more, and the teacher उनकी curiosity का use करके when he is teaching topic on Chandrayaan, he will say why not, अभी न्यूज़पेपर में 4 दिन पहले न्यूज़ आया था, आप ढूंढ के लाओ, हम क्लास में डिस्कशन करेंगे. So you get there involved. That is what is expected. Now that is theory. Practical में ये होगा ही ऐसे नहीं, अब अगर आपके क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, but that is what is ideally expected. Then dyslexia is related to, please understand, 5 marks questions तुम्हें child development pedagogy में आएंगे ही. Learning disabilities, gifted children, children with difficulties, marginalized children, उनके बारे में क्या स्कीम्स है. तुम्हारे क्लास में एक बच्चा है जिसको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, लैंग्वेज डेवलप नहीं हो गई है, उसको अध्ययन अक्षमता है, जैसे वाचन दोष है, लेखन दोष है, गणन दोष है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, अफासिया है, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है. सो you are expected to know this. We conduct teacher training program that some basic remediation can happen, because what happens, ये problems समझ में नहीं आते हैं और समझ ये गलत फहमी हो जाती है कि ये बच्चा स्लो लर्नर है. प्रॉब्लम लैंग्वेज का रहता है, मेमोरी का नहीं, इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं रहता है. इफ योर लँग्वेज इज इनएडिक्वेट, देन सी शेवटी जे लक्षात येतं तेच लक्षात राहतं ना.
पण लक्षात यायला जर शब्द नसतील, भाषा कमी असेल, तर लैंग्वेज का डेफिसिट रहेगा, देन द चाइल्ड इज गोइंग टू बी इंटेलेक्चुअली ऑन द लोअर 2 या 3 पॉइंट से भी उसका IQ कम हो सकता है. दैट्स द लेटेस्ट रिसर्च कहता है. सो अगर डिस्लेक्सिया रहेगा तर तुम्ही मालूम होना चाहिए वाचन दोष म्हणजे नक्की काय, कशाला वाचन दोष म्हणायचं. आपण त्याला स्लो लर्नर म्हणायचं की या डोक्याने कमी असं काही लोकांचा समज असतो. अँड पेरेंट्स मिसइंटरप्रिट. गती मंद वेगळं आणि मती मंद वेगळं. पण जनरली वी कन्फ्यूज दॅट. सो टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो. म्हणून हे प्रश्न काय विचारतात, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो व्हॉट आर लर्निंग डिफिकल्टीज, द डिफरन्स बिटवीन डिफिकल्टीज अँड डिसेबिलिटीज, अँड हाऊ यू कॅन डू सम प्रायमरी डायग्नोसिस सो दॅट यू कॅन counsel the parents, because parents generally don't accept the reality of their children. Unconditional acceptance nahi rehta hai, and then lot of problem will start. So dyslexia is related to, कोई बताएगा वाचन दोष मराठी मध्ये related to speaking difficulty नहीं, it's related. Dyslexia is related to reading difficulty. वो वॉस का सॉ करता है, लेटर्स मिस आउट करता है, पी का डी करता है, बैट को पैट बोलता है, कैट को डैट बोलता है. Then you understand yes, there is something wrong. Now please understand the children are potentially intelligent, but despite giving everything, still the problem persists. Then you realize वो सब करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम जाता नहीं है. There is some disability. वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहती है, ये कंप्लीटली जाती नहीं है, बट यू कैन रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी. एज सिंपल एज दैट. गिव मी अ सेकंड. सो ये एक है. डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू राइटिंग डिफिकल्टी. दे हैव वर्ड्स मिस करेंगे, क्या लिखा है समझ में नहीं आता है, कुछ ऐसा ऐसा किया है, लाइन टेढ़ी उड़ी. देयर आर सर्टेन सिम्टम्स. अगर आप टॉपिक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. बट 1 or 2 क्वेश्चंस गारंटीड ऑन लर्निंग डिसिप्लिन. गिफ्टेड चाइल्ड रहेगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव चाइल्ड रहता है. कोई बच्चा रहता है, इफ यू हैव स्टार्टेड गिविंग लेसन्स, विल नॉट पे अटेंशन, एक जगह पे बैठता है नहीं, उसका अटेंशन सस्टेन नहीं होता है, ऑलवेज चंचल रहता है, ऑलवेज मूविंग एंड नॉट पेइंग अटेंशन. तो डज दैट मीन दैट द चाइल्ड इज बैड? ही हैज द न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैट इज उसका ब्रेन में यू नो द न्यूरोट्रांसमीटर्स विल फायर सो क्विकली दैट वो ध्यान नहीं दे पाता. That doesn't mean the child is not intelligent. The child learns, but in his or her own way. So it's a good idea to know the learning style of the child. If you know the learning style of the child, whether it is bodily kinesthetic, oral learner, visual learner, then you can prepare or prepare or create your lesson plan, teaching aids, learning aids, so that he will get involved. जो बच्चा रेस्टलेस रहता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव है, उसको एक जगह पे बिठा के पढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा. नहीं तुम पढ़ा पाओगे, नो वो पढ़ पाएगा. तो प्रॉब्लम क्या है? इफ यू नो व्हाट इज ADHD क्या है, उसके 4 फॉर्म्स कैसे हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, सो देन यू कैन प्ले योर रोल मोर इफेक्टिवली. पेरेंट्स पकड़ के उसको मारते रहेंगे या ऐसा ही करता है, शरारती है, तो तुम उसको उसके न्यूरोबायोलॉजी एक्सप्लेन करके कुछ टेक्निक्स बता पाओगे. द चाइल्ड विल बिकम लर्नेबल. दैट इज बिकॉज when it comes to children with learning difficulties and disabilities, teacher is the only chance the child has. In rural areas we have seen, क्योंकि they feel that वो दिमाग का कम समझा जाएगा और बाद में घर में लड़के उसके शादी का प्रॉब्लम हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज इंटरप्रिटेड, दैट्स हाउ इट इज. सो ये बेसिक अवेयरनेस आपको है क्या, इसलिए 4-5 सवाल उस पे आएंगे. व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर? एक सेकंड ना. What is the primary responsibility of a teacher? We will see. Just give me a second. ये मैं ऊपर ले. नहीं, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए. एक सेकंड ना, मैं जरा ऊपर जाता. हाँ. What is the primary responsibility of a teacher? I need to scroll down. To help students get a degree, exchange of latest information. अभी तो गूगल चाचा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. To develop effective study habits or evaluate students correctly. Please understand, right answer आपको क्या लगता है? Right answer है to develop effective study habits. Ultimately, you have to make the learner self-learner. 10 तक पढ़ाते हैं, so it is necessary to develop effective study habits so that the child will learn on his own. Okay. All right. For effective education, which of the following is necessary? आपको learning teaching process क्या होती है, कैसे होती है, उसमें barriers क्या आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए.
for effective, because see you have content knowledge. अच्छा टीचर होने के लिए generally four things are needed. First is character, second is subject knowledge, third is pedagogy, and of course communication skill. ये चार बातें होनी चाहिए. I have seen world wars and I have suffered a lot. जिंदगी का पता है. That doesn't mean I can teach geography. मुझे geography content knowledge होना चाहिए. और वो ज्योग्राफी का कंटेंट पढ़ाया कैसे जाता है, वो बीएड में जो मेथड्स है, मेथोडोलॉजी, टीचिंग एड, लर्निंग एड, वो सब मालूम होना चाहिए. द टेक्निकलिटीज ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड एक कम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, दैट आई कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स ये सबको एनवेलप करने वाली होनी चाहिए टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड. बिकॉज वो अंदर से अगर टीचिंग का लव रहेगा, देन यू विल डेफिनेटली डू बेटर. For effective education, which of the following is necessary? The skill to attract and hold attention of the students. या attention span बच्चों का बहुत कम हो गया है, 2 मिनट की जगह. अभी तो मोबाइल के कारण तो और भी कम हो गया. Only 15% एजुकेशन मोबाइल सक्सेसफुल हुआ है. There is a huge learning loss. वो learning loss से बुरी बात ये हुई है, जैसे हम बच्चों के साथ अभी काम करते हैं, हमारे यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी का सेंटर है. So we diagnose and do the primary assessment, तो पता चलता है लर्निंग लॉस से सबसे बुरा लॉस जो हुआ है वो लर्नेबिलिटी लॉस है. Their ability to learn has gone down. They have lost the ability to read, they have lost the ability to write, they have lost the so memory सब अफेक्ट हो गया. वीडियो ज्यादा हो गया है, रीडिंग कम हो गई. That's lot of problems. उसकी न्यूरो बायोकेमिस्ट्री ही चेंज हो गया बच्चों की. तो जब तुम अभी जो स्कूल शुरू हो गए, तो एक नए टाइप के लर्नर्स है, जो पहले थे वैसे नहीं है बच्चे. उनको पहले लर्नेबल करना पड़ेगा. जो लॉस उनका हुआ है, लर्निंग लॉस रिकवर हो जाएगा. यू हैव टू मेक देम लर्नेबल फर्स्ट. सो बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि 5-6 मिनट से भी ज्यादा को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एक जगह बैठ भी नहीं पाते. एग्रेशन आ गया है, डिस्ट्रैक्शन आ गया है, ऑल दोस थिंग्स. बिहेवियरल चेंज है, कॉग्निटिव चेंजेस है. तो ये प्रॉब्लम्स अभी बहुत सारे बढ़ गए. हम उनके हाथों से मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, उनके हाथों में देना पड़ा है. एंड इट हैज बिकम पार्ट ऑफ देयर होल न्यूरोबायोलॉजिकल मेकअप नाउ. सो द स्किल टू अट्रैक्ट, भाई बच्चों को कैसा अटेंशन पकड़े जरूरी है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, नेवर मार्क योर आंसर अनलेस यू हैव सीन ऑल 4 ऑप्शन. हमेशा ये गलती होती है कि नहीं पहला ही क्या, कितना सिंपल पेपर था, सब ए बी बी. नेवर मार्क योर आंसर टिल यू हैव सीन 4, बिकॉज लास्ट ऑप्शन, पहले 3 ऑप्शन लास्ट के पार्ट रहेंगे. ऑलवेज गो फॉर द बेटर ऑप्शन. हाँ, ये एक पकड़ के रखते हैं. द स्किल ऑफ यूजिंग वेरियस टीचिंग एड्स, ये भी टीचर को मालूम होना चाहिए. क्लियर एंड लेजिबल स्पीच, ये भी मालूम होना चाहिए. द अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर. हमें सवाल ये है, आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी चाहिए. द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी. कौन सा नेसेसरी नहीं चाहिए? क्या टीचर सेंट मार के आया, अच्छा शर्ट पहन के आया, या ग्रेट क्लोज, वो नहीं चाहिए. सो पहले 3 बातें होनी चाहिए. बट कौन सी नॉट नीडेड होगा, तो नॉट नेसेसरी. तो तुम कहोगे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. व्हाट इज अट्रैक्टिव? दिस इज अ सब्जेक्टिव टर्म. ये मतलब अट्रैक्टिव तुम नहीं कर सकते. You go back to your school, close your eyes, and you will remember who was your loved and most respected teacher. Naturally someone's face will emerge. Why not? Why only he and better than others? So you will have some qualities कि वो ऐसे इसके लिए. Then the same thing, maybe they are not so attractive and उसकी जरूरत नहीं है teaching में. This is not a modeling competition, but ability to hold the attention of students, skill of using teaching aids, ये related to pedagogy, actual teacher training से related. ये quality होनी चाहिए. A child's learning does not depend upon age and maturity, previous experience learning. तुम पूछते हो ना, when you teach, previous knowledge check करते हो ना बच्चों. मोटिवेशन पे डिपेंड होता है, किस पे नहीं होता है डिपेंड. सो द आंसर विल बी इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे नहीं होता है. ये नहीं है कि भाई गरीब का बच्चा सीख नहीं सकता. इट इज नॉट लाइक दैट. एज एंड मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. यू विल नॉट टीच 10th स्टैंडर्ड का कंटेंट टू 2nd स्टैंडर्ड बॉय. प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट है. यू वुड लाइक टू नो व्हाट दे नो. सो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं होता है बच्चों का लर्निंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ये तुम कहोगे ये कैसे है कि भाई बच्चों के पास किताबें नहीं हो तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे. बट इन ऑल दिस 4, द डी इज द लिस्ट वैलिड पॉइंट. सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. You should be able to justify your answer. Responsibility for the failure of the student lies with. अभी देखो, student and teacher, teacher and student, या सिर्फ student, या all 4, all 3. I think it lies with all 3. बच्चे पे भी डिपेंड करता है, टीचर पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट पे भी डिपेंड करता है. Because you will be doing your best, मगर घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा, everything will go best. That's why we said that it's a joint venture. बच्चे का education is a joint venture between school
and the family. So answer आएगा D. The primary duty of a teacher is to be responsible to his, her family, student, society, या nation. You are an instrument, an agent of the constitution, but your primary responsibility is with your students. आपको सैलरी ठीक से नहीं मिल रही है, वक्त पे नहीं मिल रही है, that's your administrative problem. But as a teacher, you have to give your heart and soul to it, to your children, to your students, because you are primary responsible. A school is a place where teaching, learning happens. There is someone willing to teach. There is someone willing to learn. Not necessarily the big building and your audio visuals and your computer ready, LCD ready classroom. Someone willing to teach, someone willing to learn. You can call it a school. So it's very, very important to understand that the teacher is finally responsible to the student. There has to be some teaching outcomes. The important to become a teacher is, क्या है important to become a teacher? Subject knowledge, language skills, character and general knowledge. सबसे पहला क्या आएगा? Will you like a teacher who has no character to be a teacher? No, because the teacher's personality or a teacher is socially sanctioned behavior. We always idealize, correct? No, and you will impact your students' value system. Students learn values also, not just the content. So yes, सब में subject knowledge भी important है, language skill भी important है, but सबसे important है character. The most important thing is character. Then your subject knowledge, language skill, pedagogy, वो सब बात है. Your education is successful when, ये सवाल, ये past questions है, please understand. These questions have already been asked. Your education is successful when it increases your respect, gives you self-satisfaction, gets employment for you, or benefits others. Now, teacher is expected to be an ideal person. हमेशा आप ideal answer दीजिए कि जब दूसरों को मेरे education का benefit हो गया तो मैं successful person. क्या economic gain है वो बात छोड़ो. But you have to give ideal answers. So D will be a right answer. The most important quality of a successful teacher is, क्या लगता है? That he should have deep knowledge of his subject. Subject knowledge तो चाहिए. That he should be very serious about teaching. That is always expected. He should feel delight in teaching. Or D है that he should impress students with his scholarship and greatness. D is not that necessary. But सबसे important क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि when the students like the teacher, then only they like his subject generally. So अगर teacher is not enjoying his own work, if he is not taking delight in teaching, then what's the point? That's why your attitude will impact your work. Your aptitude पे impact करेगी. Your attitude will decide your aptitude and your altitude. So what is very important, if you are not enjoying your work, the heart and soul will not come. So C is considered the better answer. ये past questions है, ध्यान में रखो. You need to be, ये अगर आपको पता चला तो related कोई भी answer आपको करने के लिए आएगा. Now we will see some more questions on this, but let's come to general awareness के questions आते. Now what has happened, ये 3-4 teacher eligibility test, ये बैंकिंग के एग्जाम की टेस्ट है या टीचर की टेस्ट है, ऐसे सवाल मन में आए. This type of questions are asked. They ask questions related to general awareness. Say for example, ज्ञानपीठ किसको मिल गया? तू बोलेगा you are ask me the question related to my subject. ये क्या हो गया, किसको अवार्ड मिल गया, कौन गया, क्या हो गया, नोबेल प्राइज किसको मिल. While asking us this question, but you cannot help. They will ask. They may say we want a teacher who is well aware. So थोड़े general awareness के questions देखते हैं, which have already come, some are probable. The name given to coronavirus is virus of corona, COR virus, coronavirus 29, COVID-19 और CODU-19. गलती से हम CODU-19 निकालेंगे, इससे COVID-19. You all know that. Who is the school education minister of Maharashtra? अभी नीला सत्यनारायण है या वर्षा गायकवाड़ है, विवेक पाटिल है, कपिल पाटिल है. शी इज वर्षा गायकवाड़. तो हायर एजुकेशन के कौन है आप जाके ढूंढ लो. दीपक सावंत कौन है वो आप नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट. सो इट्स अ गुड आइडिया टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन. एजुकेशन सेक्रेटरी कौन है, सेंट्रल में प्रधान साहब कौन है, इसके पहले कौन थे, HRD मिनिस्टर काम एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसे बना, वॉट एवर नो द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड हु इज हु, ये आपको मालूम होना चाहिए. Recently presented annual budget in the parliament. किसने बजट प्रेजेंट किया? पार्लियामेंट में बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र असेंबली में. That means who is the finance minister? कौन है? सुप्रिया सुले है, निर्मला सीतारमन है, पी चिदम्बरम वो फॉर्मर थे, यशवंत सिन्हा है. कभी सवाल ऐसे आएगा, 4 नाम रहेंगे. पी चिदम्बरम फॉर्मर थे, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा भी थे, निर्मला सीतारमन अभी है, शी प्रेजेंटेड द बजट, दैट्स द आंसर. और कोई एक रहेगा
जो ऑड रहेगा. सो दे विल से फाइंड द ऑड मैन आउट. ये बैंकिंग में सवाल पूछेंगे, बट दे माइट आस्क यू दिस, भाई आप यू आर टीचिंग इकोनॉमिक्स, सो दे से दैट वी वांट टू नो, देन यू कैन नॉट से ये सवाल क्यों पूछा. दे कैन आस्क यू एनीथिंग, यू शुड बी रेडी. बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आउटलैंडिश सवाल न आए. एवरी ईयर महाराष्ट्र टीटी में ये बड़ी दुखद बात है कि 5, 6, 8, 10, 12 सवाल कभी कभी गलत रहते हैं. दैट्स टू बैड. इट डजंट हैपन जनरली इन सीटीईटी. रेयरली अभी 1-2 बार हो गया, बट दे विल गिव यू द मार्क्स. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. सो यहाँ अवार्ड आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारामन. शी इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, सो शी विल प्रेजेंटेड द बजट इन द पार्लियामेंट. अभी सवाल आता है कि अभी बजट आ गया तो एजुकेशन पे कितना एलोकेशन है, वो आएगा. सवाल आएगा कि एजुकेशन जो है वो कौन से लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में है. एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड प्राइमरी एजुकेशन वो जनरली स्टेट के पास. Who was honored with दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली? अमिताभ बच्चन, भूपेंद्र हजारिका, यश चोपड़ा या प्राण? जिसको दिया अभी अमिताभ बच्चन को दिया. ये जो इनको दिया ये पहले दिया गया. Which country recently left the European Union? Brexit हो गया. You are expected to know this as teacher. You are expected to know. It's not just geography and economics. This is generally a teacher is expected to know. The answer is, कोई बताएगा? कोई बताएगा? Has anyone answered? Let's see. Yeah. Answer is Great Britain. इसलिए Brexit बोलते हैं. ब्रिटेन का एग्जिट Brexit. So यूरोपियन यूनियन से निकाल गया. अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो जेलेंस्की कौन है, पुतिन कौन है? हाँ, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस. हाँ, ये कहाँ चल रहा है. सो ये जो करंट अफेयर्स है, यू एज अ टीचर यू कैन नॉट बी ऑब्लिवियस, या उससे दूर नहीं रह सकते हो. दे वुड लाइक टू नो वेदर यू आर सो अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जस्ट नॉट सब्जेक्ट नॉलेज एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स. बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच फॉलोइंग मेटल? किसका है? आपको मालूम है कि वो एल्यूमिनियम का है. नाउ सम क्वेश्चंस जनरल में, वो टीचर एप्टीट्यूड में, पेडागोजी में, व्हाई दे आर आस्किंग, यू कैन हेल्प इट. दे आर आस्किंग, यू कैन हेल्प इट. बी क्वाइट श्योर एक सवाल आएगा ही. COP26 जो अभी हाल ही में ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में जो एनवायरनमेंट का क्लाइमेट चेंज पे जो समिट हुआ, हाँ, पार्टीज ऑफ प्रैक्टिशनर, कंट्रीज ऑफ जो प्रैक्टिशनर्स है, वो COP26. तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? आप प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड. इंडिया ने कमिटमेंट लिया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे. उतना ही कार्बन रिलीज करेंगे जितना हम वापस दे लेंगे. तो ये बेसिक क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कौन से गैसेस के कारण होता है, इंडिया की हालत क्या है, इंडिया का पावर कहाँ से आता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ है, हीट बढ़ गई है, हीट वेव्स क्या है, ये जनरल हमेशा चलता है. एज अ टीचर दे वुड लाइक टू नो वेदर यू नो दिस, एंड डोंट से दैट दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू टीच. सो ये जनरल अवेयरनेस पे सवाल आते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. नाउ डीएड के बच्चों के लिए, दोज हु आर गिविंग डीएड एग्जाम, उनको तो ईवीएस तो रहता ही है. सो दिस इज जस्ट नॉट पार्ट ऑफ दैट. यू कैन नॉट से यू आर गिविंग साइंस, 60 मार्क्स का साइंस लेके दे रहे हो, तो दिस क्वेश्चंस आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड. इंडिया एस्पायर टू बी, कितनी इकोनॉमी बनना चाहती है इंडिया बाय 2025? आंसर है यूएसडी 5 ट्रिलियन. आंसर रिपीट हो गया है. ये अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ये हमारी एक एम्बिशन रखी है. Who became the first CDS? और जो अभी एक्सीडेंट में चले गए, बड़ी ट्रेजेडी थी इंडिया के लिए. कंबाइन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? एडमिरल रामदास दौलत, जनरल KM दौलत, जनरल विनायक जोशी. आंसर इज जनरल बिपिन रावत. वो हेलीकॉप्टर क्रैश में द फर्स्ट CDS जो तीनों सर्विस के चीफ बने थे. ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च, इरिगेशन, फिशरीज या ड्रिंकिंग वाटर. इट्स रिलेटेड टू फिशरीज. The capital of Andaman and Nicobar क्या है? Port Blair है, दीव. The answer is Port Blair. So you understood what type of question they are asking. Is the universal receiver blood group? कौन से है? यूनिवर्सल डोनर O है, तो रिसीवर कौन सा है? मैं आपको ये बताऊंगा, आप ढूंढ लीजिए. AB है या और कौन सा है, आप ढूंढ लीजिए. डोनर ने पूछा है, रिसीवर पूछा है. Is the biggest trading partner of India? Yeah, AB. Yeah, correct. किसी ने आंसर करेक्ट दिया है. Is the biggest trading partner of India. Now, earlier it was Japan, then it was the USA. Now, biggest trading partner of India is China. You need to know. They might ask you. अभी इमरान खान साहब थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनको निकाला गया, तो who became the new prime minister? 2-3 नाम रहेंगे.
तुम्हें वो मालूम होना चाहिए कि नवाज साहब वो शरीफ साहब बन गए हैं। सो ये जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है, नोबेल प्राइजेस, इंडिया के प्राइजेस, पद्मा अवार्ड जो अभी दिए गए, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 1 or 2 क्वेश्चंस यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। ये जो स्टैटिक जनरल नॉलेज है वो 1-2-4 पेज का ही है, वो इतना जरा नजर डाल के रखा तो भी यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली डू। अभी वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन और ऑर्गन। इट्स क्लियर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो मालूम होना चाहिए। Who was the president of Sahitya Academy, president of the Sahitya seminar held in January this year? अभी प्लीज अंडरस्टैंड, दे विल आस्क क्वेश्चंस। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, आप BSc किया है, आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो हमें? हम मराठी पेपर नहीं पढ़ते अभी, तो भी दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू महाराष्ट्र ज्योग्राफी। 1-2 सवाल रहेंगे एंड द करंट इवेंट्स, कल्चरल स्पेस में किसको क्या अवार्ड मिल गया, किसका कौन प्रेसिडेंट था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द साहित्य सम्मेलन हेल्ड इन जनवरी, ये लास्ट ईयर का है, उसका आंसर है फादर फ्रांसिस देब्रूटो फ्रॉम वसई। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट। From Maharashtra won the global award given by the UNESCO and Worky Foundation for use of technology. QR कोड के लिए एक टीचर को ये नेशनल अवार्ड मिला था, बाद में इंटरनेशनल अवार्ड मिला एंड यूनेस्को का। दिस क्वेश्चन इज जनरली एक्सपेक्टेड, ये टाइप के सवाल आएंगे। वो मिला रंजित सिंह डिस्ले को, द नेम ऑफ दैट टीचर इज डिस्ले, रंजित सिंह डिस्ले को ये अवार्ड मिला। जो QR कोड आप क्वेश्चन पेपर में यूज करते हो आंसर शीट में, वो उसकी आइडिया थी। Now let's come directly to some sample questions related to child development and pedagogy. जनरली कौन से टाइप के सवाल आते हैं, मैंने आपको बताया टीचर एटीट्यूड एप्टीट्यूड पे, देन जनरल अवेयरनेस पे। अभी कुछ देखते हैं सवाल कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे क्या सवाल है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 60 marks will be on social studies, 60 marks will be on math science. We will try our best. मैथ का एक राउंड अप देंगे, एक सेशन आपके लिए इमीडिएटली मेरे सेशन के बाद मैथ्स का रहेगा, जो जनरली बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम करता है, वो मालूम होना चाहिए। सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू कवर हियर। देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश आल्सो। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसने किया? हु एडवोकेटेड? स्किनर ने किया। you need to know this, पहले बिहेवियरल स्कूल था, बाद में कॉग्निटिव आ गया, अब अभी वो कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो पेडागोजी में डेवलपमेंट हो गया वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मेथोडोलॉजीज वगैरह कैसे डेवलप हो गए। सो जॉन डीवी का कंसेप्ट था कि बच्चे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन हो तो अच्छा है। ये जॉन डीवी का कंसेप्ट था, आपने साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में पढ़ा रहे। अभी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ऐसे आएगा, मराठी में क्वेश्चन, नीचे ही इंग्लिश में क्वेश्चन। समटाइम्स अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो मराठी में पढ़ो, कभी मराठी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में पढ़ो, समझ में आएगा। ऐसे होता है। Which of the following is the most appropriate activity for gifted students? ये पास्ट क्वेश्चंस है, ध्यान में रखो, पूछे गए सवाल। Which of the following is the most appropriate activities? रहता है वेरी क्विक टू आंसर, क्रिएटिव रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहती है, बट एट द सेम टाइम देयर गिफ्ट कैन बी अ बैरियर आल्सो। दे कैन बी डीमोटिवेटेड, ओ हमारे लेवल का नहीं है, दे मे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ बिहेवियरल इश्यूज आ जाएंगे, तो उनको एक चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट लगता है। एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर लाइक द कैपिटल असेट्स, उनको राइट फील्ड में भेजना स्कूल की जिम्मेदारी है। सो अगर ऐसे कोई क्विक लर्नर है, सबसे तेज है, दिमाग सबसे ज्यादा अच्छा है और उसका IQ बहुत हाई है कि भाई ये 70 के पास रहेगा तो हम उसको डल या लो लेवल का कहते हैं, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। बट अगर हाई लेवल का IQ है उसका, तो वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, तो उसको क्या एक्टिविटी दो, या चुप करोगे, ये करोगे, वो डिमोटिवेट हो जाएगा या प्रॉब्लम करेगा। तो सॉल्व एक्सरसाइजेस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर एट वन गो, चल एक ही झटके में करो, इतना होशियार है तू। टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे, बोलो टीचर डे पे तू ही जाके पढ़ा। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड, या राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कंसेप्ट्स। अभी उसके लिए चैलेंजिंग क्रिएटिव टास्क फोर्थ अच्छा है। अगर वो गिफ्टेड है, मींस ही इज एन ओरिजिनल थिंकर, इज अ क्रिएटिव थिंकर, इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का आदमी, हायर एबिलिटी का आदमी, तो ये रूटीन काम करने के लिए नहीं बोलोगे, उसको कुछ चैलेंजिंग दोगे, तो वो ओरिजिनल प्ले, ये अच्छा एक ऑप्शन रहेगा इसको। I'll take this up. A child possessing bodily kinesthetic intelligence.
अगर जिसके पास, you see every child is gifted in his or her own way. अरे switch off your mobile, internet is installed. So कभी कभार ऐसे सवाल आता है कि every child has learning style. तो जो बच्चा मूवमेंट ओरिएंटेड है, जैसे एथलीट बन सकता है, डांसर बनता है, he can use his body very effectively. I may be a great physician, but that doesn't mean I can be, अगर मेरा हाथ ऐसे हिलता है तो मैं सर्जन नहीं बन सकता. सर्जन बनने के लिए मेरे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी की स्टेबिलिटी लगती है, जैसे वोकेशनल स्किल में लगती है. तो अगर तुम्हारे कोई बच्चा एक लर्नर है जो बॉडीली काइनेस्थेटिक में बहुत अच्छा है, उसके मूवमेंट्स, उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत अच्छा है, तो वो किस फील्ड में जा सकता है? ऑरेटर बन सकता है, पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, पोएट बन सकता है. सर्जन बन सकता है क्योंकि उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी तरह यूज कर सकता है. आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे इसका सर्जरी का, तो हमें डर लगता है, बट ही विल कॉन्फिडेंटली और शांति से वो सर्जरी करता है, ब्रेन से ट्यूमर निकालता है, बट उसका हाथ जरा भी नहीं हिलता है, बिकॉज ही हैज दैट व्हाट वी कॉल द साइकोमोटर एबिलिटी. तो अगर उसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट हार्वर्ड गार्डनर का मालूम रहेगा. इंटेलिजेंस इज मल्टीपल, और बुद्धी ही अनुवंशिक नसते, उपजत असते. एज नो मैन हैज जीरो IQ वगैरह, वो आपको मालूम रहेगा. तो ही टॉक्ड अबाउट बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, वो लोग सर्जरी में, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं. ये सो यू नीड टू नो हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड ऑल दिस थिंग्स. ना विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या कशाचे, ओके, knowledge of so and so of what will be most significant for a teacher dealing with a class comprising students of mixed age group. अगर mixed age group के बच्चे हैं और तो कौन सा नॉलेज टीचर को उसके टीचिंग के लिए इफेक्टिव हो जाएगा? कल्चरल बैकग्राउंड, डेवलपमेंटल स्टेजेस बच्चों के, ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. कौन सा बैकग्राउंड एग्जैक्टली टीचर के लिए यूज पे आएगा अगर डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे थे? तो यू कैन डेफिनेटली थिंक कि भाई पेरेंट का प्रोफेशन से उसका क्या लेना देना, जो नहीं है उनको निकाल, एलिमिनेशन टेक्निक, और दो रह गए तो जो ज्यादा प्रोबेबल वो सिलेक्ट. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू मस्ट नॉट मार्क द आंसर टिल यू हैव सीन ऑल द ऑप्शंस. सो कल्चरल बैकग्राउंड बच्चों का पॉसिबल है. डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में अगर बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है कि वो देरी से बोलने लगा, देरी से चलने लगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज लेट हो गए, उसका विजुअल ऑडिटरी परसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम निकले, वो बात अलग टाइप की है. सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो गरीब है या बड़े बाप का है, उससे कुछ लेना देना नहीं है. बट यू वुड लाइक टू नो द कल्चरल बैकग्राउंड, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कौन से टाइप की लैंग्वेज उसको मिली है. सी इफ द चाइल्ड कम्स फ्रॉम झोपड़पट्टी एरिया, उसकी लैंग्वेज, बिहेवियरल इश्यूज रहेंगे. सो व्हाई द चाइल्ड इज बिहेविंग द वे द चाइल्ड इज बिहेविंग. So you will like to know, भाई अच्छा ये बैकग्राउंड का बच्चा है. That doesn't mean you will have prejudices और उसके ऊपर दूसरे नजरिए से देखोगे नहीं. ओके ठीक है, तो इस बैकग्राउंड से तेरा लैंग्वेज का डेफिसिट ज्यादा रहेगा. So I will work on that. So that type of input you can get when you look at the cultural background. Okay, classification of students in different groups on the basis of their IQ tends to क्या करता है, सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करेगा और एकेडमिक परफॉर्मेंस का डिक्रीज करेगा. क्या करेगा? अगर आप बच्चों को ABCD, होशियार बच्चे सिर्फ A में, D में, डल बच्चे हैं कुछ काम के लिए, इफ दे थिंक लाइक दैट, then their self-esteem will definitely go down, and then their academic performance will also go down. A teacher's primary responsibility is to maintain, give the children the sense of self-worth. कि भाई तुझे कुछ आता नहीं है, तू कर नहीं सकता, but till the teacher says you are good, you can do, you are doing, the child will keep performing. So teacher has to protect the child from all these negative influences. कि your father का बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, छोड़ दो, मुझे लगता है तू पढ़ पाएगा. राजू, you are good, you can do, the child will keep doing till the teacher reposes and demonstrate the faith. अगर टीचर ने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखा, बच्चा ज्यादा परफॉर्म करेगा. लो एक्सपेक्टेशन रखा, लो परफॉर्म करेगा. दैट इज द नेचुरल आउटकम. सो टीचर्स बिहेवियर आल्सो इम्पैक्ट्स द लर्निंग आउटकम्स, बिकॉज दैट सेट्स द बेंचमार्क. सो अगर तुमने बच्चों को उनके IQ पे अगर ग्रुप में डिवाइड किया, तो उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड.
डिक्रीज हो जाएगा, दोनों डिक्रीज हो जाएगा। बट टीचर इज अ सोर्स ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ आयडेंटिटी, रिस्पेक्ट एंड एव्हरीथिंग. मुलांच्या आत्मप्रतिष्ठेचं रक्षण करायची जबाबदारी आहे. ओके, युअर इंटेलिजन्स इज डिफरंट, तेरे एजुकेशन का परफॉर्मन्स डिफरंट, एंड यू एज अ पर्सन यू आर डिफरंट. विद्यार्थी केंद्रित, ओके, ये दिस वी सॉ. हाँ हाँ, अभी देखो, इन साइंस प्रैक्टिकल्स, बीएससी वालों के लिए सवाल है. बॉयज जनरली टेक कंट्रोल ऑफ apparatus and ask girls to record data of wash utensils. ये लड़कियों का काम नहीं, एसिड बिसिड देखना ये बच्चों मर्दों का काम. You know, they have the stereotypes. So sex is biological, but gender is a social construct. एक सामाजिक दृष्टिकोन असतो की मुली कमी ताकदीच्या, कमी डोक्याच्या, त्यांना काही जमत नाही वगैरे. वी कन्सिडर देम इन्फीरियर. दैट द सोशल कंस्ट्रक्ट, जो वैल्यू सिस्टम बच्चों की भी हो सकती है, जिसको निकालना है. वही द पीपल ऑफ इंडिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, ये जो है. और जो प्रॉब्लम्स है, एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, वो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट उस पे व्हाट इज द सॉल्यूशन? हु विल करेक्ट दैट परसेप्शन? अगर बॉयज में ये परसेप्शन है कि लड़के इंफीरियर है, तो इमीडिएटली द टीचर हैज टू इंटरवन. और अगर तुमने देखा कि तुम्हारे क्लास के प्रैक्टिकल्स में लड़कियों को सेकेंडरी रोल दिया जाता है, बच्चे ही सब करते हैं, तुझे नहीं आएगा, तू लड़की है, देन इमीडिएटली इट्स योर ड्यूटी टू इंटरवन, बिकॉज यू आर एक डिसफंक्शनल पर्सनैलिटी शायद डेवलप हो जाएगी. तो तुम क्या करोगे अगर ऐसे होता है? ये कौन सी टेंडेंसी है? गर्ल्स बीइंग डेलिकेट प्रेफर लेस एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क. Girls are excellent observers and record data flawlessly. Stereotyping of masculine and feminine roles take place in school also. Boys can handle equipment more efficiently. No, no, no. Answer will be 3. ये if the अगर आदमी आगे जाके सोचता है कि the girls are good for nothing, then upbringing उसके फैमिली की नहीं, the school is also somewhere responsible. क्योंकि अगर जब ये stereotyping हो रहा था कि ये लड़की तुम्हारा काम नहीं, ऐसे भेज रही है, मर्दों का काम, तो मर्द वाला काम, then the correction must have happened there. वहीं पे होना चाहिए था. So stereotyping of masculine and feminine roles take place in schools also. Be very clear. The word compulsory in the right to free and compulsory education 2009, जिसके कारण ये TET लग गई. Just not free and compulsory education, but quality education also. और वो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्वालिटी टीचर चाहिए. तो क्वालिटी टीचर डीएड बीएड से नहीं बनेगा, इससे TET ले लो, CTET ले लो. That's the general thing. That might be wrong also, but that's how the thinking is. So compulsory in the right to free and compulsory education का मतलब क्या है? Parents are compulsorily forced to send their children to school to avoid punitive action. अगर पेरेंट नहीं भेज रहे, the action can be taken against them. इतने बच्चे पैदा हो गए, स्कूल में कितने हैं? That is what it is. Compulsory education will be imparted through continuous testing. Central government will ensure admission, attendance, and completion of elementary. Appropriate governments will ensure admission, attendance, and completion of elementary education. So compulsory education will be imparted through continuous testing. Second will not be. First will not be. Why? Because एक larger answer, जो पहले 3 आंसर्स है, वो फोर्थ में है. Appropriate governments will ensure. एडमिशन होगा, नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स का देखो क्या है. खिचड़ी सिस्टम, फूड देते हैं, फ्री किताबें देते हैं. आगे इन रूरल एरियाज, अगर लड़की को छोटे लड़की है, उसके छोटे सिबलिंग्स को देखने के लिए घर में रहना पड़ता है, तो सिबलिंग्स के लिए खेलने की भी प्रोविजन, बच्चे को लेके आओ. बट कम टू स्कूल till the age of 14, 6 and 14, children must be in school, not at home, in the fields or in hotels working. They have to be in the school because that is their fundamental right. Even the parents cannot deprive. Okay, lesson planning पे सवाल. Which of the following principles is not involved in lesson planning? Clarity of objectives, चाहिए ना clarity of objectives, knowledge of teaching, rigidity of planning, and knowledge of pupils. Learner भी मालूम होना चाहिए, objectives मालूम होने चाहिए. You know ना, when the lesson ends, this will be the cognitive change, उसका psychomotor change, उसके affective domain में changes. You know ना what will be the outcomes clearly. But rigidity of planning, ये lesson planning में नहीं चलता. You have to be flexible. You have to be flexible. Now imagine, suppose you are the chairperson of a board of school education. How would you plan to improve the overall quality of education in schools under your jurisdiction? एक इंटरेस्टिंग सवाल है, पास क्वेश्चन है ये. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये किस टाइप का एग्जांपल है? यू नो, हाई ऑर्डर कन्वर्जन, हाई ऑर्डर डाइवर्जन, लोअर ऑर्डर कन्वर्जन, लोअर ऑर्डर डाइवर्जन. आई थिंक द आंसर विल बी हायर ऑर्डर डाइवर्जन का सवाल. सो व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग क्वालिटी करने के लिए तुम क्या करोगे? यू नो, यू हैव टू थिंक इन अ डाइवर्स वे. फॉर इफेक्टिव टीचिंग क्या जरूरी है?
there are maxims of education, no, from known to unknown, correct, no, so from abstract to concrete, जो है ना, so which one will be here? For effective teaching, go from known to unknown, use innovative teaching aids, there should be peace in the class, the teacher should teach for more time. Now teacher should teach for more time, there should be peace in the class, innovative teaching वगैरह aids करने से effective teaching के लिए, that's a part of A. What they know, first know, and then take them to what is not known. So you check the previous knowledge, because from known to unknown, it's a paradigm of it. So A will be a better answer. Which is the proof of effective teaching? Just we saw, I think we just saw, all students attend the class, the teacher teaches loudly, students asking questions to the teacher, and teacher passing the exam with good grades. That is also not asking questions to the teachers. That children are curious and their curiosity is used. So C is a better answer. पहले भी इसी type का similar question आया. For effective education, which of the following is necessary? The skill to attract and hold. ये हमने देख लिया. This question we have seen. A successful teacher must know the theories of teaching, because क्यों चाहिए? It saves time. It helps in explaining the content of the lesson in an easy way. It helps in maintaining discipline, or it makes content entertaining. क्यों चाहिए टीचर को मेथड और थियरीज ऑफ टीचिंग क्यों मालूम होना चाहिए? स्किनर क्या कहता है, थॉर्नडाइक क्या करता है, कहते हैं व्हाट इज वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, कोलबर्ग ने क्या कहा है, व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर नीडेड, व्हाई यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, because you need to know how learning actually happens, how learning process happens at various domains. So it helps in explaining the content of the lesson in an easy way, maintaining discipline, and make the content entertaining. That is not so important over here. A successful teacher को मालूम होना चाहिए टाइम सेव नहीं होता है, because it helps in explaining the content of the lesson in an easy way, the way they learn. You should teach not the way you can teach, but the way they learn, because if learning is not happening, teaching is of no value whatsoever. तो टीचिंग के बारे में क्यों बोले अगर लर्निंग नहीं हो रहा है? सो एग्जामिनेशन सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, whether the teacher has become successful, whether the objectives of teaching have been achieved or not, इसके लिए इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है. सो जनरली वी नो कि भाई बच्चों ने पढ़ा है या नहीं, मैंने पढ़ाया है, वो पढ़ लिया है, एग्जाम दिया है, हो गया. You know, there was one cartoon, a child is shown, there is a cage, and उस केज में एक पैरट है, और ये दो बच्चे हैं, और एक बच्चा बोलता है कि मैंने मेरे पैरट को विजलिंग सिखाया है. दूसरा बच्चा कहता है मैंने तो कभी इसको विजल करते हुए, मारते हुए सुना नहीं. वो बच्चा बोलता है मैंने क्या कहा, मैंने बोला मैंने उसको पढ़ाया, उसने पढ़ ले ऐसे बोला. तो बच्चे पैरट नहीं है, स्कूल केज नहीं है, और टीचिंग लर्निंग पैरटिंग नहीं है. मैं बोलता हूँ मेरे पीछे बोलो ऐसे नहीं है. यू गेट द पॉइंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड जब पढ़ाते होते ब्रेन में क्या होता है. अभी ये डेकेड को हम ब्रेन बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं ना, मेंदू आधारित शिक्षण, बिकॉज वी ट्राई टू नो व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, न्यूरल लेवल पे क्या होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड कि बच्चा कुछ सीखता है तो सिनेप्सिस ब्रेन में तैयार होते हैं, डेंड्राइट न्यूरॉन्स गेट कनेक्टेड, और जो जितने बार रिपीट होता है उतने वो स्ट्रेंथन होते हैं. ब्रेन में एवरी सेकंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स बनते हैं, यूज देम और लूज देम होता है. सो एट द न्यूरल लेवल, ब्रेन के लेवल पे हम एजुकेशन, बच्चा पढ़ता है मतलब ब्रेन में क्या होता है. सो बच्चा पढ़ता है, ब्रेन इज एन ऑर्गन ऑफ लर्निंग, राइट. सो ये परसेप्शन आ गया. सो लैंग्वेज ऑन ब्रेन, लैंग्वेज ऑन लर्निंग, ये नए नए इंफॉर्मेशन हमें आ गया. तो हमारा teaching method अभी थोड़ा change हो रहा है. We are using metacognition and all these things. The reason is that we understood what happens when a person learns at the neural level, brain में क्या होता है. तो तुम्हारे teaching method ये इसमें थोड़ा change तो आने वाला है because of this latest research. Now, which is the wrong statement? कौन सा wrong statement है? Related to assessment. Evaluation and assessment का जो फर्क है वो भी आपको मालूम होना चाहिए. समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो भी कुछ है वो उसके डूज एंड डोंट्स वगैरह, क्वालिटीज, वो तो दैट्स अ कोर्स सिलेबस, दैट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, यू नीड टू नो. अभी which of the following is false? गलत सेंटेंस बोला है. there is a need to make changes in present education system. evaluation has to be a continuous process. अभी देखो, there is a need to make changes in present education system. करेक्ट है, सब दुनिया चिल्ला रही है, कट एंड पेस्ट, धोखा नहीं होगा, ये थोड़े होगा. अगर एक सवाल पूछा भाई चाय कैसे बनाते हैं,
हाँ स्टेज 10 स्टेजेस है, बर्तन ले लो, पानी ले लो, गैस जलाओ, दूध डालो, शक्कर डालो, चाय पत्ती डालो वगैरह, और एक स्टेज को 1 मार्क है। आपने चाय पत्ती डाली नहीं, 1 मार्क गया, 90% मिल गया, बोर्ड में फर्स्ट आ गया, उसका चाय नहीं बना, वो क्या है? सो यू जस्ट कैनॉट कट एंड पेस्ट। ये इंफॉर्मेशन ओरिएंट से हम नॉलेज इकोनॉमी में जा रहे हैं, सो कट एंड पेस्ट नहीं चलेगा, वी नीड कट एंड डेवलप। सो वी नीड सम चेंजेस इन प्रेजेंट एग्जाम सिस्टम। फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, अभी मिल गया नहीं, और भी 4 है। I said unless you have seen all 4, don't mark your answer. Evaluation has to be a continuous process. Yeah, हम है ना, continuous comprehensive evaluation है ना, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन है ना, वो सेमिस्टर एग्जाम में नहीं तो कंटिन्यूसली ले लो, नहीं समझ में आएगा रेमेडियल करो, डायग्नोस्टिक रेमेडिएशन वो तो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव हम कर रहे हैं। वेरियस टूल्स शुड बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, ये भी ट्रू है। द एग्जाम सिस्टम इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स कॉम्प्रहेंसिवली। कौन सा फॉल्स है? I think D is false. Why it is false? Because you cannot say a child cannot write. Does that mean that he has not learned? Maybe he can demonstrate. वो डांस करके कुछ एक्टिविटी करके डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा। So whether learning has happened, whether now see take example of language learning. ना earlier we used to teach. Now teaching से हम learning पे आ गए, अभी acquisition पे आ गए। We cannot teach language. Learning can happen naturally because language is acquired naturally. नेचुरलिस्ट मेथड वगैरह पे आ गए। सो कॉन्टेक्स्ट दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख पाएगा। सो अभी हम टीचिंग करते थे, इसीलिए हम इंग्लिश कैसे पढ़ाते थे? हम नॉलेज सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अभी वो नॉलेज सब्जेक्ट नहीं है ना, इट इज अ स्किल सब्जेक्ट। डोंट टीच अबाउट द लैंग्वेज, टीच देम हाउ टू यूज द लैंग्वेज। तो पेडागोजी में क्या चेंज आ गया? डे 1 से टर्न योर लेफ्ट, टर्न योर राइट, ओपन द पेज बुक, व्हाट्स योर नेम, ये सब शुरू हो गया। डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, वी स्टार्टेड मेकिंग देम यूज द लैंग्वेज। एमए के इंग्लिश में अगर इंग्लिश बोलने के लिए आता है तो फिर क्या फायदा? लैंग्वेज आना मतलब लैंग्वेज बोलने के लिए आना। सो स्किल पे आ गए, वी केम टू 4 स्किल एंड 5th स्किल पे अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एम्फोसिस है। कौन से 4 स्किल? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। करेक्ट? नो, राइटिंग, रीडिंग कम्स फर्स्ट, देन राइटिंग कम्स, राइट? और 5th स्किल इज द थिंकिंग स्किल, कि लैंग्वेज का यूज करके उस लैंग्वेज में थिंक करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे जोर क्यों है? बिकॉज उस टाइप की इकोनॉमी सामने आ रही है। Because you have to prepare children for the changing world, not just for the board examination. You have to prepare them for life. ये अभी larger concept आ गया। So false कौन सा है? कि एक ही एग्जाम से बच्चों के बारे में सब पता चलता है। It is not possible. There is no one exam that can know everything about you. You get the point? Everything about you. Acha. What are the objectives of primary education? Now see, please understand, primary education पूछा है, 1st to 5th तक के बच्चे नजर के सामने रखिए। To inculcate the habit of करेक्ट लगता है, मगर 1st स्टैंडर्ड का बच्चा सेल्फ लर्निंग के लिए इक्विप है। वी टीच देम ना, वी डोंट लेक्चर देम, राइट? टू बिल्ड द वो बड़ों के लिए है। सो बी कैनॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इट। ए पकड़ के रखो। टू डेवलप इंटेलिजेंट थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मुश्किल लगता है ये। दे डोंट हैव द कंसेप्ट ऑफ नेशन, स्टेट, कम्युनिटी, वो उनको मालूम नहीं। सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो जाएगा। बट यू कैन से इनकलकेट द हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ लर्निंग हो जाएगा। तो फिर अच्छा आंसर कौन सा रहेगा? नाउ द क्वेश्चन कम्स, ऑल अबाउट तो नहीं है, तो विच वन यू वुड लाइक टू टेक? तो इसमें से तुम जनरली कहोगे कि भाई बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी रहती है। मुझे लगा था सेल्फ लर्निंग का डाउट लग रहा था, बट इन कंपेयर टू, सी प्लीज अंडरस्टैंड, यू मे नॉट गेट द बेस्ट परफेक्ट आंसर। तो 4 में से जो अच्छा है उसको ले लो। समटाइम्स तुम्हें लगता है 4 भी आंसर नहीं है, मगर ये थोड़ा सा अच्छा है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट। इफ यू डोंट मार्क द आंसर, क्वेश्चन गलत है, यू मे नॉट गेट द मार्क। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। सो ए अच्छा रहेगा कि भाई ऑब्जर्व करो, क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ाओ, और उसमें वो बेसिक न्यूमरेसी दे विल लर्न। पर अदर रिमेनिंग 3 आर फॉर हायर लेवल स्टूडेंट्स। नाउ what is the primary responsibility of a teacher when you are delivering content whatever? उनके कॉग्निटिव शिफ्ट, कॉग्निटिव चेंज आना चाहिए, उनमें साइकोमोटर चेंज आना चाहिए, जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है उसमें कुछ चेंज। एंड ऑफ द लेसन दिस विल बी द चेंजेस, लर्नर में ये चेंजेस आएंगे वगैरह वगैरह। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर? टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट अ डिग्री
exchange of latest information, वो गूगल चाचा पे बहुत होता है, we don't need now. To develop effective study habits or to evaluate students clearly. Now I said that हम एसएससी को शालांत परीक्षा कहते हैं, मतलब अभी हो गया, now you can learn on your own. अभी तेरे स्पेसिफिक फील्ड में जा और आगे चला जा. We developed your basic numeracy, reading, writing, thinking, basic competency. We have competency based education. So एक लेवल पे तुझे लाके रख दिया, अगर नहीं हो गया तो फिर रिपीट करना पड़ता है, that we fail them because the objectives of are not developed. So what is the basic requirement? क्या objective है? That the learner becomes effective self learner. All learning is self learning. Every time there will not be a teacher to teach you. You have to learn on your own. So तुम्हारे cognitive abilities, reasoning, critical thinking, creative thinking, reading, writing, ये सब creativity वगैरह develop करके एक level का करके तुम्हारे प्रोफेशन के लिए हमने तैयार करके छोड़ दिया था. That's the output is expected शालांत एग्जाम के बाद 10 years के बाद. That is what is expected. So 4th स्टैंडर्ड को तुम 10th स्टैंडर्ड का लेटर राइटिंग का सवाल नहीं देते हो, मगर 10th स्टैंडर्ड को 4th स्टैंडर्ड का भी नहीं देते हो कि भाई वो एक लेवल के लिए certain competencies are developed. अभी go for your higher role. तो ultimately making him the self learner, and to become a self learner you need to inculcate, develop effective study habits. उसकी लैंग्वेज वगैरह एक लेवल पे लाके तुम भेजते. कुछ कोर्सेज 10 के बाद होते हैं, कुछ 12th के बाद होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद होते हैं. ऐसा द रीजन इज एक सर्टेन लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए. 10 सेकंड स्टैंडर्ड का लैंग्वेज लेके आप 10 की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, 10 का लेके 12 की नहीं कर पाओगे. एज एंड स्टेज लैंग्वेज है या नहीं हम देखते. लैंग्वेज का डेफिसिट रहेगा तो एकेडमिक डेफिसिट होगा ही. अपनी ब्रेन उतनी ही यूज करने को होगी जितनी हमारी लैंग्वेज. लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लर्निंग, दैट वी ऑल नो. सो एक इफेक्टिव स्टडी हैबिट अगर उसकी रहेगी तो आगे जाके डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग सब कर पाएगा. आगे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखोगे तो 40% एजुकेशन इसेंशियली ऑनलाइन, हाइब्रिड ही रहेगा. नाउ वी आर कमिंग आउट विद डिजिटल यूनिवर्सिटी. फिजिकल कैंपस ही नहीं है, पूरा डिजिटल. ये एक नया हाउ टेक्नोलॉजी मेडिएटेड, हाउ टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग एजुकेशन. दैट्स अ ग्रेट कंसर्न ऑफ योर्स. बट डोंट वरी, कोई भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. अभी सर्वे अजीम प्रेम जी का कहता है कि यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च से दिखा दिया कि ऑनलाइन ओनली 15% ही सक्सेसफुल हो गया. नथिंग अंडर द सन कैन रिप्लेस अ टीचर. एंड आई हैव अ gold medal in instruction designing and distance education, but I don't believe in that. It is only for the adult or advanced learners, not for the price. It's a silly thing to make a junior KG child sit and try to teach him online. उसका attention span क्या, उसकी visual auditory perception capability क्या है. But we felt that we are doing it. At least something happened, some connection remained, and that has, as I just explained you, affected their learnability a lot. And the primary deficit is the language deficit. So effective study habits अगर वो रहेंगे, वो खुद पढ़ पाएगा, and then he can respond to the changes. जैसे knowledge change हो जाएगा because they have the ability to derive knowledge out of information वगैरह वगैरह. तो आंसर रहेगा to develop effective study habits. It is not correct to say that evaluation is the panacea of all ills of our education system. सब evaluation को change करो, पूरा education system change हो जाए, ऐसे कहना गलत है. It's not correct because evaluation is narrative. Evaluation only shows the present situation. It does not give any solution. Evaluation is a time consuming process. Evaluation is not related to all education programs. Fourth is ना, जो निकाल कौन से सकते हैं, evaluation is narrative. वो narrative है या objective है, बात छोड़ दो, that's irrelevant. Fourth is also irrelevant. Second और third में आंसर है. Evaluation is a time consuming process, but it is essential. Why second is an answer? बच्चा फेल हो गया, 35 मिल गया या 30 मिल गए, मगर doesn't show any solution. That's why we have continuous comprehensive evaluation process. नहीं आता है तो डायग्नोस्टिक करो और रेमेडिएशन करो, तुरंत उसको पढ़ाओ, पीछे नहीं. That's what it is. So second is a better answer here. According to modern science of education, teaching का मतलब क्या है? To explain information with adequate educational aids, to motivate learning, to explain complex concept in easy language, or to give information. To give information is बिल्कुल नहीं. तो कौन-कौन से निकाल सकते हैं? To express concepts in easy language. Every time it may not happen. To explain information with adequate educational aids. I think to motivate learning. Please understand, we have seen that the learner has to be motivated to learn. When ये motivated learning तभी हो जाएगा जब ये बच्चा self motivated है, self सीखने के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है. That is what constructivism is all about.
लर्निंग हो जाएगी, मोटिवेट लर्निंग हो जाएगा. A teacher's role is that of a facilitator. Which of the following shows that role? CTET, TET में उल्टा पाल्टा करके 2-3 बार आया है ये सवाल. A guide by sight, not a sage on the stage. ये किससे पता चलेगा? A teacher must speak loudly and clearly in the class. इससे facilitation होता है. A teacher should create right learning environment in the class, which is emotionally secure, where children make mistakes, learn from each other, ask questions, know more, and construct their knowledge. Constructivism. B, A से अच्छा आंसर है, मगर still two are remaining, and we have got to see them. A teacher should arrange field visits, not so relevant. A teacher should evaluate students regularly, but B is better than all the 3 remaining options. So create a right learning environment. That's what is being facilitated. If a teacher asks students to do anything beyond their capability, immediately क्या हो जाएगा? बच्चे frustrated हो जाएंगे. It will lead to frustration, stress, and worry in their minds. Students will not be enthusiastic to learn. Students will not come to school. None of the above. पहला हो जाएगा. We generally don't ask students to do beyond what we cannot evaluate what we have not taught. No, जो उनको पढ़ा नहीं उसके बारे में सवाल कैसे पूछेंगे? So out syllabus नहीं चाहिए. They will get immediately frustrated. You get the point? And then there will be stress, which is toxic stress. अगर toxic stress रहेगा बच्चों पे, बड़ा प्रेशर आता है, डर है, तो ब्रेन में न्यूरॉन फॉर्म नहीं होते, फॉर्म हुए न्यूरॉन भी टूट जाते हैं. So जो लर्निंग किया वो दिमाग से निकल जाता है. That is actually seen on the screen. At the neural level we can identify this कि frustration, stress आ गया, बच्चे सीखते नहीं है. That's why emotionally secured environment हो तो अच्छा है. Child development and pedagogy पे कुछ चंद और सवाल है, then we will come to English and then we will come to what you call that. I'm very happy students are giving answers. Very good. If students are not interested in learning in the class, then कहाँ problem है? There may be a flaw in the classroom environment. बाहर बहुत आवाज है. Physical disturbance can cause disruption. अच्छा है, देखते हैं, पकड़ के रखते हैं. The teaching process may be problematic. Yes, the teacher has not prepared his lesson. Problem with all this. I think problem with all this. बाजू में फैक्ट्री का आवाज चल रहा है, ठक ठक चल रहा है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा. हाँ, अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा. टीचर प्रोसेस में भी प्रॉब्लमेटिक, या कुछ टीचिंग एड, लर्निंग एड, लेसन प्लान ठीक नहीं है, लर्नर को ठीक से समझ के नहीं बनाया है, दैट उनके स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स को ध्यान में नहीं रखा है. व्हेन वी से चिल्ड्रन विद एसएलडी बोलते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. अगर तुम्हारे क्लास में कोई लो विजन का बच्चा है तो उसको तुम सामने बिठाओगे, या लो हियरिंग है तो उसके बाजू में जाके शिवाजीचा जन्म कोणत्या वर्षी झाला असा आवाज करून बोलल की नाही, so that he will listen. So you will try to create, you will make some changes, but if you are not aware of their learning needs, तो teaching problematic हो जाएगा. And lesson plan you have to prepare. Every time learner is different, so you cannot say 30 साल से पढ़ा रहे हो, doing the same work 30 years is not 30 years experience. So it is very important to understand every time learner is new, their learning needs are new. Everyone learns in his or her own way. So understanding the learner properly so that your lesson plan will be better. So fourth will be a better answer. Problem with all these reasons. Which questions are more credible? Objective questions are more credible. ऐसे में according to one पंडित ऐसा कुछ संस्कृत का श्लोक लिखा तो he can influence. शेक्सपियर ने कहा, तिलक ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, then it will happen. He can influence you. Short notes based on general awareness. Objective questions are more credible. A to या B to B, he cannot influence. So they are generally considered more trustable, more credible. If students are able to explain the central theme of a poem, then we can say that they have acquired the following competence: analysis, comprehension, reading, yeah, application of understanding. You will realize the fourth is a better option because all three are part of four. ये fourth तभी आएगा जब ये तीन रहेंगे. So better answer is application of understanding. Say for example, you have the chemistry का part पढ़ाया है और your children are in the laboratory और कोई बेहोश हो गया, तुरंत ऑक्सीजन चाहिए. You have taught them some reactions and you ask how can we produce, हमें ऑक्सीजन चाहिए. कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसे ऐसे रिएक्शन से हम ऑक्सीजन बना सकते हैं. Then he has learned it, he has acquired it. He has knowledge, not just information, because he can use what he has learned to solve a problem. Actionable जब हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, then it becomes knowledge. So ये तभी होगा जब उसको वो पूरे समझ में आए, उसने रिटेन किया, एक्वायर किया. So all three will be part of four. So four is a better answer. So now let's come to what are the questions asked.
अभी मराठी I could not take for want of time, but we will see some questions. Now the sequence of, please understand, content पे questions रहेंगे and pedagogy पे questions रहेंगे. तुम BSc B.Ed हो तो भी इंग्लिश करना पड़ेगा, वहां भी 1 मार्क उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने तुम्हारे 60 मार्क्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट. Please understand. So don't say, don't become negative. It's not so big. If your English is good, you can teach the content in a better way. The sequence of a writing process would be कैसे रहेगी? Reviewing, monitoring, translating. अगर कुछ एक ऐसे लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? प्लानिंग, ट्रांसलेटिंग, रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग, या प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, क्या रहेगी? तो कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करने के लिए बिगिनिंग, मिडल एंड एंड तो रहेगा. सो इट्स अ गुड आइडिया टू हैव द प्लानिंग. नो, पहले प्लानिंग करोगे, बाद में तुम क्या करोगे? कोई लिख रहे हो, उसको ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो प्लानिंग करोगे, बाद में रिव्यू करोगे या ट्रांसलेटिंग करोगे? नहीं, हम प्लानिंग पहले करेंगे, बाद में ट्रांसलेशन जो भी कुछ है करेंगे, एंड देन रिव्यू करेंगे. So second will be better answer. There will be planning first, and at the end you will review to improve it. While reading, one of these helps students understand relation between different parts. क्या रीडिंग करते वक्त एडवर्ब से, प्रोनाउन से, प्रॉपर नाउन से, या फ्रेजल वर्ब से? किससे हो जाएगा? अंडरस्टैंड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. So that happens when generally what adverbs do, they describe actions. Adjectives, they are describing words, people, action, places, वगैरह वगैरह. तो pronouns से क्या करेंगे? Understand the relation between different parts. कौन सा नाउन? so उससे नहीं हो जाएगा. Phrasal verb से हो जाएगा. Phrasal verbs mean take care of, understanding. Adverbs will slowly, fastly, but I think phrasal verbs will be a better answer here because they will have more connectors. Colloquial means a form that is unsuitable for informal conversation. में तो हम बोलते हैं ना, informal conversation. See, when you write official documents, you cannot use do. You have to write do not. Formal conversation में, informal writing में, or scanning during reading. Formal conversation में you are not supposed to use colloquial language. घर की जो short form वगैरह use करते हैं बोली भाषा पे, we don't use them. So अगर बच्चा ऐसा use करता है, if a child is using lot of colloquial, उसके reading writing में आता हो, then you have to go for the correction. Critical reading requires learners to read. क्या प्रोसेस है critical reading की? Reading for understanding. Reading means deriving meaning out of the print. Meaning making exercise बोलते हैं ना reading, from the print. So reading for understanding होना चाहिए. For understanding the information directly in the text. अभी reading is between the lines and beyond the lines means just not reading what is given over there. What is intended, what is hinted, what is implicit, वो सब मालूम होना चाहिए. Total जो छिपा हुआ सब मतलब निकालने को आना चाहिए. To recognize ideas and information not directly requires judgment about the accuracy of the text and validity of the conclusions drawn. For the generation of new and more relevant ideas and proposing alternative ideas. So effective critical, see, please understand, they are asking critical reading, not just effective reading. Understand the question. Critical reading. For understanding information directly in the text, that is general reading. Reading for understanding. We are talking about critical reading. ये रीडिंग करने के बाद कुछ तो आउटकम्स अलग होने चाहिए, just getting other information. To recognize ideas and information not directly stated, possible है, पहला तो नहीं है. In a manner that requires judgments about the accuracy of the text and validity of the conclusions drawn, or the generation of ideas. I think third is a better answer because second is part of third. छिपी हुई बात भी समझ में आई because you are judging whatever ideas. Critical thinking हम क्यों करते हैं? Because we have to come to a certain conclusion. So third will be a better answer. In a word, tell. The phonetic transcription, please understand, one question on phonology रहेगा ही. क्या हो जाएगा? Tell का phonetic IPA का चार्ट अगर आपको मालूम है, be very clear. One question will be definitely on phonology, one question on figure of speech, poetic devices and all. 100% ये सवाल रहेंगे. You can always expect these questions. In a word, there can be a passage also, there can be a poem also. It depends upon what they will ask. But comprehension पे सवाल तो रहेगा. In the word tell, the phonetic, tell me a tale of a tale. TAIL भी है, TELL भी है,
और TALE भी है। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आई थिंक सेकंड विल बी द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आप डिक्शनरी में देखोगे तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया रहता है। तुम्हें IPA का चार्ट आना चाहिए। A teacher is a source of pronunciation also. Peter, Peter, raindrops, yeah, I hear thunder. So I hear thunder here. The children will get confused. So it's your responsibility because children will learn how the teacher articulates the language. So बच्चे जो pronunciation उनका रहेगा, वो pronunciation will be your pronunciation. You are the source of language also. A teacher is the source of language. An example of using an idiom is make hay while the sun shines. Her speech at the assembly had hit the nail on the head. Sweet are the uses of adversity. The rainbow has 7 colors. यहाँ idiom कौन सा है? What is an idiom? Idiom is वाक् प्रचार जिसको बोलते हैं, मुहावरे, जो नॉर्मल वर्ड से आता नहीं है, उसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आती, तो हम इडियम का या मुहावरों का यूज करते हैं। आनंद गगनात मावे ना सजाला, मैं was so happy that his happiness was so big, वो sky में भी रह रही। So we try to understand the intensity of it. Correct? No. So यहाँ idiom कौन सा है? So hit the nail on the head is an idiom. You get the point? We say ना आँखों का तारा, an apple of the eye. ऐसा अपन बोलते हैं ना? That's it. Which teaching a teacher should reflect while teaching, a teacher should reflect on the following facts except understanding of the learning goals, वो तो जरूरी है, compensation of the lost time occurred in sharing learning goals with students, devising appropriate method to achieve these goals, designing of assessment to know what students already know. एक बात टीचर जब टीचिंग करेगी तो छोड़ के बाकी 3 कौन सी बातें इसमें है, एक कौन सी बात उसको जरूरत नहीं है अगर वो इफेक्टिवली पढ़ाना चाहता है। कॉम्पेंसेटिंग फॉर द लॉस ऑफ टाइम, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, भाई वो 10 मिनट अभी नेक्स्ट लेसन में कम करता हूँ, ये नहीं करोगे। ऑल रिमेनिंग 3 लर्निंग गोल्स मालूम होने चाहिए, अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज मालूम होने चाहिए, कैसे करेंगे, एक्टिविटी लेंगे, लेसन प्लान में करेंगे, टीचिंग एंड लर्निंग एंड व्हाटएवर, या उनको कुछ करने के लिए बोलेंगे, या डिजाइनिंग assessment करेंगे so that you know that children have acquired, but second is not the right answer. अभी देखो, high dropouts rates in primary classes can be attributed to the following except. Now please understand, ये primary का नहीं, ये पेपर 2 के लिए भी पूछा जाएगा। high dropouts rate है ना, तुम्हें wastage, stagnation and dropout rate इसके बारे में मालूम होना चाहिए, उसके causes वगैरह, उसके solutions भी मालूम होने चाहिए। high dropout rates in primary classes can be attributed to the following except irregular attendance, lack of awareness of parents, lack of proper teacher training, lack of initiative on the part of the government. अभी प्रॉब्लम ये है, हाई ड्रॉप आउट रेट सबके बारे में है मगर एक के बारे में नहीं। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स आर वेल ट्रेन्ड, अज्यूम्ड है। इरेगुलर अटेंडेंस वो है, लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो भी है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स। ये ड्रॉप आउट रेट के लिए हो सकता है क्या? इरेगुलर अटेंडेंस ये ड्रॉप आउट का एक रीजन हो सकता है, क्या आता नहीं है सर्टन के बाद नहीं। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, आई हैव सीन व्हेन आई यूज्ड टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्कूल के वो एसएससी के लिए यूज्ड टू कंडक्ट इन एरियाज, फिशरमैन कम्युनिटी में यूज्ड टू कंडक्ट सेशंस, तो वहां बच्चे का कल एसएससी का पेपर है ना, तो डर ये रहता है प्रिंसिपल को कि लड़के को लेके डैडी लेके जाएंगे बोट पे फिशिंग के लिए, क्योंकि उसके एसएससी का इंपॉर्टेंस मालूम नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, नाही जायचं नको जाऊ, तुला नाही जायचं ना नको जाऊ। सो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ये भी एक रीजन हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग, लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं तो हो सकता है, बट यू कैन नॉट से कि टीचर ट्रेनिंग नहीं रहेगा, टीचर आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेन, तो रीजन हम बता नहीं सकते हैं कि ड्रॉप आउट का। बाकी तीनों वी हैव टू फाइंड एक्सेप्ट वन, ध्यान रखना। Which of the following promotes social learning? Collaborative learning, summative assessment, brainstorming, or formative assessment? I think collaborative learning, when you have a group activity, they learn to behave with each other. Leadership, role division करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, diversity के साथ काम करेंगे, collectively goal achieve करेंगे. So collaborative learning will lead to social learning. Learning disabled children generally show conceptual disorder रहती है, perceptual disorder रहती है, हैबिचुअल डिसऑर्डर रहती है, या फिजिकल डिसऑर्डर। लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे नॉर्मल इंटेलिजेंस के होते हुए भी उनमें कुछ दिक्कतें आती है जो ओवरकम नहीं किए जा सकते हैं तुम्हारे बेस्ट टीचिंग मेथड से, देन यू अंडरस्टैंड देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम, सो सम कंसेप्चुअल डिसऑर्डर्स रिमेन इन देयर।
हैबिचुअल, फिजिकल और परसेप्चुअल नहीं रहे। हॉवर्ड गार्डनर गेव मल्टीपल इंटेलिजेंस इन, अभी ये सवाल एक बार टीईटी में पूछा था, क्यों पूछा मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये 84 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम का हॉवर्ड गार्डनर का किताब है, वेयर ही इज फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस इन मल्टीपल साइको, तुम्हारा वो स्पेशल रहेगी, लिंग्विस्टिक रहेगी, नेचुरल रहेगी, मैथमेटिकल रहेगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक रहेगी, म्यूजिकल रहेगी, वगैरह वगैरह, जो कुछ आर्ट एंड इंटेलिजेंसेस उन्होंने बताए वो 1984 में। अगर ये 1984 या 85 में हुआ, वो कभी हुआ वो जाने दो, अगर आपका आंसर गलत है, does that mean you are not a good teacher? But they ask this type of questions, God knows why, but they ask. इससे बेहतर होता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करे, या उसका काउंसलिंग में कैसे यूज करे, या टीचिंग में कैसे यूज करे। ये सवाल अप्रोप्रिएट रहता। ये सवाल पास क्वेश्चन पेपर में से आया है 1984। What is why they ask? But they ask. You can't help. Education is now fundamental right, legal right, social right, economic right. We have seen it's a fundamental right which cannot be violated. Now I will wait over here. My friends, please understand, these are the questions which are generally asked. Now social studies पे, मराठी पे और science पे questions मैं नहीं ले पाया because there is no time as such. But जो common core content है, child development and pedagogy, so उसमें उसका सिलेबस अगर आपको चाहिए तो mahatet. इन पे आप गए तो आपको मिलेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, anywhere you will find. I did not waste my time in that because, but understand one thing, you are expected to know psychology, उसका relevance, education thinkers, education methods जिन्होंने दिए, and there will be questions on what is effective teaching, what are the barriers, problems, and how we will solve the problems. इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ही आउट ऑफ 30। किसमें आएंगे? चाइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी पे, उस पे आएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन लार्जली स्पीकिंग। Then we saw some question related to teacher attitude, aptitude, then general awareness. वो पूछते भाई, पूछते तो पूछते, कुछ नहीं कर सकते हैं. And then we saw questions on English also. Please understand there will be definitely a passage. For want of time I did not take. Passage रहेगा, poem रहेगी, questions on how you will teach grammar, how you will teach vocabulary, how not to teach वगैरह वगैरह। अगर तुम्हारे क्लास में एक बच्चा है, इनका ये प्रॉब्लम है, what you will do? So methods, pedagogy और content पे सवाल रहेंगे। Now, please understand, we had a very limited time because I'm asking Amita to take 1 hour session on teaching of math. Math पे जो सवाल रहेंगे, उस पे वो एक middle ground है. That's why I have done it. We prepare students for this TET, CTET. Recently, we conducted online batches also. If you want some help from our side, you note down our numbers. We will be very happy to be of help. This is a huge barrier. Please understand, I do believe that just because 150 question में से आपने 90 के बजाय 89 लाए, that doesn't mean you are not a good teacher. I personally don't believe. I mean, I have seen very good teachers, but not necessarily Howard Gardner ने किताब कभी लिखा था ये मालूम नहीं है. That doesn't mean he is not a good teacher. But this is required. So please look at the question papers, go for the past question papers, and understand the structure. And while you are doing your BA, it's a good idea to do it because it's a huge barrier. अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट, एडेड, अनएडेड, माइनॉरिटी, एक जमाना था जब चर्च के स्कूल वालों को वी यूज्ड टू टेल देम दैट दे नीड टू क्लियर। अभी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया एंड लॉट ऑफ टीचर्स का करियर प्रॉब्लम में आ गया। सो यू हैव गॉट टू क्लियर दिस टीईटी और द सीटीईटी। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप दोनों करो। तो हम क्या करते हैं कि अभी मैडम का मैथ्स का सेशन शी इज अरेंजिंग, वी विल टेक 2 minutes break, then I will ask her to continue from her system. She will be teaching on board possibly because math or pedagogy, she has her own content. That too in 1 hour it's too difficult to do it because when we prepare students we have around 25-30 sessions का वो program रहता है. But in whatever ways we can be of help, we will be very happy. We have some recorded sessions and all. So it's a good opportunity talking to you. And as I said, don't take fright of this exam. If you study the BEd content and the textbooks, जैसे मैंने कहा ई भारतीय एनसीईआरटी से, and look at the question papers, then you will understand exactly what type of questions are framed. But sadly, as I said, in MahaTET, I have seen that lot of questions are to be asked to banking and government exam के लिए वो भी सवाल पूछे हैं. So a lot of irrelevant questions and lot of wrong answers, wrong questions. अभी जो TET हो गई, इसमें इतने questions गलत थे that even in English there were a lot of wrong questions. I think more than 20-25 questions गलत थे.
So, irrelevant answer. There are no answers. Yeah, repeat हुए हैं वगैरह वगैरह. That is the sad part. But you have got to prepare for it. So if you prepare systematically now, I think huge barrier. नहीं तो क्या हो जाएगा, इतने मेहनत से आपने बीएड किया है, but ये barrier के कारण तुम you won't get the approval. आप पढ़ा नहीं पाओगे. And I have seen lot of schools वो जब permanent करने क्या उनको ज्यादा salary देने का वक्त आता है, then they say TET लेके आओ. So that has been happening. Lot of students keep complaining. So see to it that you take care of that. Okay, so now I'm asking Amita to take over. She will be taking care of this. So thank you very much. Over to Amita. Just wait for 2 minutes. We will start. Good afternoon. This is Amita. I'll be shortly there with you. Just give me a moment by the time, because it's math. You need to have question paper or questions in front of you. I'm just making provision that put it into the chat box so that you will have questions with you. Just bear with me. Meantime, you can also take a break for 1 minute or something.
I have put the Google Doc link in the chat box. These are the questions related to maths we are going to see. I would be very happy if you could just click on that link and let me know whether it works, and let me see if you can see those questions. Please put it into the chat box, either of my name, and you can do that. Just so maybe I guess just now Prakash sir told me that you are there is a no, things are getting projected also. So maybe ma'am could just project this Google Doc file in front of you. So it would be really nice. That window could be opened, and then you guys will have to see my board independently. If things are working like this, or you'll have to switch the windows as I'm not there in front of you. Could you just put it into the chat box and let me know whether you can see the file? Do let me know. I'm waiting for you. Could you just tell me whether you can see the file? Is it there with you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it's time to go. Go ahead, right? Yes, ma'am. Okay, just give me a moment and I'll share the. So let's begin. I'm sorry for all the delay just because of the file. I hope I'm audible. I hope I'm audible. If you could put it Yes, into ma'am. the. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Let's see. Sir has already given you the background of your TET, exactly how the questions are going to come. I'll be taking you through the math content. Math content when it comes to your CTET and your Maha TET, it is almost same. Only thing as when it comes to Maha TET, the intensity or the level of math that they ask you there could be a little bit complicated, that sometimes they ask you MPSC level of questions also. CTET papers, if you just go through almost 5 to 6 years past papers, you will understand their pattern very thoroughly. So please, when you want to give your attempt, CTET, and especially when it comes to math section, I would request all of you at least solve 5 to 6 years test papers, and so that you will understand. Even their format is quite similar every year. The questions they ask you, they are also with a similar pattern. They are not the same. They don't repeat the question, but if you get the enough practice of all the sections, it is not at all hard for you to crack your CTET, that is CTET that we say. Maha TET is like, it is a little bit difficult to predict how the paper will be, because they keep on changing the things. Sometimes they involve your pedagogy questions, sometimes they don't, or sometimes very few questions they ask. But in CTET, they have the set pattern that there are going to be by all means question on your math pedagogy also, which is not predictable in Maha TET. So please remember one thing. Before you start preparation, always see the past papers. Then while you are preparing, that time also see to it that you be connected with the past papers and you understand how your pattern is going to be. So let's focus on the math content, what you're going to have. Now, as they have suggested, if you see the Maha TET notification or your CTET notification, they say that for paper 1, they will be asking you questions
based on the syllabus up to 8th standard, something like that. Maha-TD, it doesn't happen. So please don't be under wrong impression that they will be asking you questions on the up to the syllabus 8th standard. It is not like that. I would recommend you that you prepare up to 10th standard. That is important because the level of questions that they ask, even the previous TET that was there that time, also the questions they asked were little bit difficult questions. So don't limit yourself to the 8th standard syllabus. For CTET also, it's the best way that you prepare up to 10th standard so that you will be thorough. Understand one thing, though you will be, you are giving Maha-TET, in case if you're giving Maha-TET, I would advise you that you start your preparation with the help of NCERT books for maths. If you just follow the CPSC books or something, your foundation will be very clear. I am quite sure there are some students, they are like, I know they feel that math should be destroyed from the world, or they find maths very difficult. Are you getting it? So that time you may feel that you may keep math preparation at the end, or you might have the phobia towards that. Please don't do that. Go back to the school books. Everything is there. They don't ask anything else beyond the textbook. So first read your textbooks, finish the things, know your fundamentals really well, and it is not at all difficult for you to crack your math part. That is that simple. Try to learn some techniques of Vedic maths and speed maths, because it's all about, many of our students, they say that we could not get enough time. The time was very limited. We could not complete the paper. Why so? Because you try to solve the paper the way you solve, along with your students in the class. Competitive exams, they have the time limit for each question. Each question, like for Maha-TET, you should be able to solve each question not more than 40 seconds. You should not be taking more than 40 seconds. So, if you have the big calculations, is it getting fit in 40 seconds, that you should be knowing. So time management is most important. It just knowing how to solve will not help you. See to it that you have enough practice, and your calculations should be speedy as well as accurate too. You need to know your tables, you need to know your squares and cubes really well. If you do not know, at least you need to know some tricks and techniques how to find out squares and cubes whenever you are in need of. So please do that before having the basic skills. Please don't try to solve, or don't try to start preparing the other topics. Get yourself equipped with the basic tricks and techniques, and then only you start with the maths time. So this was certain tips I would like to give you. Now coming back to the content, what contents are going to be? They will be asking you definitely question on 4 fundamental operation, that is addition, subtraction, multiplication, and division. By all means, there would be questions on that. They will ask you for paper 1. They will be asking you by all means 1 or 2 questions on your place values and all. Some people have difficulty, they do not know what is place value and what is numbers value, and the decimal value, fractions, all these things, they have difficulty. So please go back, clear your fundamentals there. So by all means, you will be having questions on that. Then there will be question on numbers. There will be question on test of divisibility. There would be question on, as I said, that fractions, because fraction is there in 3rd, 4th standard. So by all means, you're going to have enough questions on fractions. There would be questions on your triangles, squares, their property, angles and all. By all means, there would be question. There would be question on volumes also, that is mensuration part. For paper 2, by all means, more of geometry will be definitely there. So prepare that really thoroughly. There would be question on ratio proportion. There would be question on percentages, all the topics that you have. For paper 2, you will be definitely having questions on interest, that is simple interest, compound interest. There would be question on time and distance, speed. On that, questions will be there. For paper 1, comparatively, you have limited syllabus. So instead of my little bit, just keep on going on the timing.
open that link, Google Doc link, and while solving the question, I'll keep on telling you all these things. So here is the file that you have. The first question is like, if you see there, the first question, 15, 21, 36 are what type of numbers? So as I told you that they will be for paper one, they will be definitely asking you questions, related to numbers. So here you need to know what kinds of numbers are there. Whenever I ask students, they say that even numbers, odd numbers, composite numbers, some even know about prime numbers. Yes, but beyond that, they do not know. You need to know your, other than your these numbers, you know the squares and cubes, but there are some triangular numbers, there are pentagon numbers, there are rectangular numbers also. You need to know that. And TET is fond of this type of questions. They definitely ask you, after 1 or 2 years, they keep on asking you those questions. So you need to know exactly how to find out. See here on the board, I'll tell you the first question that you have. 15, 21, and 36 are what type of numbers? Now, here, suppose, if you do not know, I generally wouldn't like you to go for your, formula and all these things. Suppose if you do not know, at least even if you know the concept of what are numbers, or if suppose if it is square numbers, then how exactly it is formed. If you know that, they even then with the help of options, you will be able to find out. So here, instead of my telling you how to find out 15, 21, 36, what type of numbers are there, I'll tell you how to do that. These square numbers, I think we teach our students like this, right? 1, 2, 3, 4. 2 times 2 is 4. That is, what you say is square is 4. This is how we say. Then 3 square, that does mean we do something like this while teaching. So this is going to be 3, 3, 3, that is 9. Here also you get 3, 3, 9. So each square number, this is how you teach. I don't go deep into that. Then you need to know what are triangular numbers also here. For example, 1 is considered as a triangular number. That does mean you can draw a triangle over here. Are you getting it? 2, if you take 2, 2 cannot be a triangular number, but if you take 3, then by all means, you can have a triangle over here. So 3 is a triangular number. Are you getting it? Then is 4 triangular number? Obviously not. So what it is then? The next number is going to be the 5, and this is how you will be going on. So here you need to know exactly how do you find out triangular number. Then you can proceed ahead. So here 15, 21, and 36, all these numbers are basically triangular numbers. If you just search how to find out triangular numbers, you will definitely get the answer. I'm not going to spend much time on that. It is quite easy. 1 plus 2, you get 3, that is triangular number. 3 plus 2, you get 5, that's triangular number. Or else you can just draw the dots and find out, you will get the numbers, whether they are triangles or not. So first answer is the second one, that is triangular number that we saw. Now let's proceed ahead. The second question says that of a total sum, A has 0.6 times and B has 2 by 5 times. And this is what they have said. If A has 560 rupees more than B, then how much rupees altogether A and B both have? Now, this type of question, this is basically a type of this is basically in before COVID, you had the TET. The question is from that test paper. All the questions that I have given here are either from CTET or TET. So these are past question papers, and this is how they ask you. So here, of a total sum, A has 0.6 times and B has 2 by 5 times. Now, A has 560 rupees more than that of B, then how much rupees altogether A and B both have? So this is basically question related to numbers. That is a question problem on numbers that we say
from that topic, this question is there. Here they take care of your knowledge of your decimal points, your knowledge of your fractions, everything will be taken care. So in one question, they understand exactly what math skills do you possess, those they think, those they take care of it. So let's see here how to solve this type of question. Let's see here. Anybody has got answer for this question? Do let me know. Do let me know how to solve this. There is a sum. Are you getting it? So we do not know the sum. So sum we can assume it as x. Try your best that you don't write, whenever you solve competitive exams, try your best to be very brief. Don't try to write the way we write in the exam. Let sum be x and all this thing. Just assume that sum is x. At A, you have 0.6. Are you getting it? That does mean here you should be able to know that 0.6 means it is 6/10, that decimal fractions value. You should be able to convert this decimal fraction into this fraction. Are you getting it? So here, if I reduce it, I get the answer. It is 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So you can convert this into pure fraction. So here A is what? A has 3/5 times. Are you getting it, sum? Whereas you see B is already given, that is 2/5. So here, please, many students, those who find difficulty, they feel that, oh, A 0.6, this is 2/5. What do I do? But the person who is with the basics and who can convert these things will have no difficulty. Now it becomes 3/5 and it is 2/5. So whole sum means whatever the money it has given, that is done into what? 5 parts, 2 parts. B is getting, 3 parts A is getting. This is how that simple you have it. Now 3 parts are equal to 560, because what is said, if A has 560 rupees more than that of B. So, okay, so 560 rupees more than that of B. So what we will have to do it, we will have to do only this. 3/5 of X, that is going to be A's sum A is going to have, and 2/5 is going to be B's sum, and A has 560 rupees more than that of B. That fraction means from B's money, if I subtract from A's money, if I subtract B's money, the amount or the difference I should be getting 560 rupees. It should be clear for you. Now you can just do it that x/5 is equal to 560. How it came? 3 minus 2, because you have common denominator as same denominator, that is 5. So you can definitely go ahead and do the subtraction. It's going to be 1x/5 is equal to 560. Then x will be equal to 5 multiplied by 560. That is going to be answer 2,800. So that does mean altogether they are going to have rupees 2,800. This is how your answer is going to be. So here, nothing like this. Only thing, if you convert this, you should be able to get your answer. When somebody has more than another person, that does mean by all means, you are going to do the subtraction. This what function you are going to do, that is what. This is what is the knowledge they are asking from you, whether you can understand the word problems and do the critical problem solving. So keep on taking screenshots once you, instead of writing, I have been giving the number also. Now let's proceed ahead to question number 3. In case if you have any doubts, keep on asking me. You can unmute your mic and ask me, or you can just put it into the chat box. I'll be able to help you out. Now let's proceed ahead to question number 3. Let's proceed ahead to question number 3. Question number 3 is, if you see, if sphere of a metal with 2 centimeter radius is melted to make spheres of radius that is 1/2 centimeter, then how many spheres could be made? This is the question from TET, CTET. 2 years back it was. Now this is the question related to mensuration, that is volume.
Here you need to definitely know formula for your volume of sphere. That formula you are supposed to know. Once you know that, you will be able to find out exactly what are you supposed to do. Here, what type of function they are asking you? There is a sphere with 2 centimeter radius, and that is melted, and out of that, half a centimeter radius, okay, they have made balls. So that does mean out of one, they are going to make many other balls. So that does mean by all means, there is going to be many from one. If that is the concept is there, that does mean when do you get many from one? By all means, you have to do the division. Are you getting it? This is what is the reasoning skill you should possess. If your fundamentals are clear, then you will be able to make it. From this question, I'm telling this because there are many guys who simply do not know exactly after reading this question, what am I supposed to do? Exactly what I'm going to do. Am I supposed to do the subtraction or division or something? So that time, remember one thing, whenever you have many are made out of one, that does mean to get that number, many number, you will have to definitely do the division. So let's see how to do it. First, before that, anybody, can anybody give me the formula for volume of sphere? Volume of sphere. Can somebody give me the formula? Do you know? Do you know? It is 4/3. Anybody knows? Pi r cubed, right? This is the formula for sphere that you need to remember. Now, once you know this, yes, pi r cubed, that is fantastic, my dear. Now here, many are made out of one. So if you want to find out number of those many, how many spheres could be made, then what you will have to do it? You will have to divide the volume of big sphere by volume of small sphere. So that does mean, I'll just write like this, volume of big sphere divided by volume of small spheres. So this equals to number of small spheres. This will give you number of small spheres by honest. Now here, many what they do is unknowingly they try to solve this formula. Please don't do that. When you are going for this division like this, there is no need to do that. What are you supposed to do is 4/3. Please don't try to put the value of pi. Please don't do that. Just r, you take care. R is given over here is what? The sphere of metal with 2 centimeter radius. So here 2 centimeter, that does mean this is going to be 2 cube here. Are you getting it? That is r cube. That is r is 2 centimeters. So make it like that. And here you have 4/3 pi. And here you have again another one, that is another radius is given, that is half centimeter. Half a centimeter, that does mean 1/2 the whole cube. So here, instead of like this, to save my time, I'll just write here that 8, and here I will write at 1/8. 1/2 ka cube, that is going to be 1/8. I hope you understood this. Now here, see, this part will go, this part will go, and your answer is going to be 8 multiplied by 8 upon 1. Reciprocal ho jayega, right? So answer is going to be 64. It is that simple. So you are going to have 64 small spheres. Yes. I hope you understood this. This is plain and simple. If you get the enough practice of it, you should be able to understand. In case if you do not understand, do ask me. If you want to take the screenshot, please do that so that the answers will remain with you. And let's proceed ahead to question number 4th. How many quarters are there in 18 3/4? So just now we saw the questions on problem on numbers.
Then there was one question, like they will ask you question on volume. Volume could be of sphere, it could be of cone, it could be any other shape. So please do that. All the varieties here you get on problem on numbers, please try to solve each and every so that you will be familiar with all those things. Now let's proceed to the next question. The next question is, by this time you would have solved some questions. It is pretty simple. I got some answers, and those were exact answers. Question number 4th. What they have said, how many quarters are there in 18 3/4? 18 3/4. This is what is the sum is there. I'm sorry. You can do two-way. There are people, if you are like, 18 fours are plus 3. This is how, if you do it, even then you will get the answer 75. Or else, if you do not know, some people do not know how to convert this into pure fraction and all. If you do not know that, then what you can do is, you should know like quarters means what. When of whole, if you make 4 parts, that each one part is called as quarter. So one whole has got 4 quarters. Are you getting it? So here you have 3 quarters by all means, and then 18 multiplied by 4, you get answer. Whatever answer you get, in that, if you add 3 by all means, your answer will be 75. I hope you got it. 18 fours are 72 plus 3, you will get answer 75. From where did you get 3? Out of 4. Can you see that out of 4 quarters, 3 quarters are there? Means from out of one whole, 3 are already given. So you consider 3 quarters already given, and 18 multiplied by 4 up karo, you will get the answer. So this was the question number 4th one. Answer was 1. Option number 1 was right. Now let's proceed ahead to question number 5. As I have very limited time, I'm going with a little bit lightening speed. The 5th one, if you see, if from the following number of things are to be equally distributed among students, then which number of things cannot be equally distributed among the students? Now see here, bit of a confusing type of question is there, but if you are existing teacher and you know the topic, you will understand that this is the question related to test of divisibility. Are you getting it? This is the question related to a test of divisibility. Now, by all means, in your Maha TET, they will be asking you questions on test of divisibility. By all means, one of the questions you are definitely going to go get. So please know your test of divisibility by heart. Test of divisibility, how do you know? Like, how do you understand if number is divisible by 2? You know that number should have in the unit places either 0, 2, 4, 6, 8. Then that number is divisible by 4. This is how we can clearly say divisibility of 3 is going to be when you add all the digits in the number, whatever the sum that you get that should be divisible by 3, then you can say that that number is divisible by 3. 4's divisibility is going to be last 2 digits of number should be divisible by 4, and then that number will be divisible by 4. 5's divisibility in the unit place, the unit should be either 0 or 5, then that number will be divisible by 5. 6 divisibility, number should be divisible by 2, should be divisible by 3, then you can say that number is divisible by 6. 7's divisibility is not there. 8's divisibility is whatever number they have given you, last 3 digits should be divisible by 8, then that number is divisible by 8. 9's divisibility is same like 3. You add all the digits, and if they are divisible by 9, you can say that number is divisible by 9. This is how you need to know up to 16 test of divisibility. It should be quickly coming to you, and then you will have no problem understanding it. So here what they have said, if from the following number of things are to be equally distributed among the students, then which number of the things cannot be equally distributed? So you need to find out numbers divisibility. One number is not going to be divisible by one particular number, that you need to find out. So here 1, 4, 3, 9 is given.
Now, if you apply, because instead of my dwelling deep, because here my point was know your test of divisibility. How to solve this question? Let's see. Here you apply rule of divisibility by 11, then you will get the answer. Means all the other numbers, if you divide them by 11, they will be divisible, but only the first option, if you try to divide it by 11, it will not be divisible. What is divisibility of 11? Let's see here, option number A, 1439. Suppose this is a number is given and you need to find out whether this number is divisible by 11 or not. What are you supposed to do is, you are supposed to take numbers at odd places first. Are you getting it? And then remaining numbers you will take. This is how you will do it. What are you going to do it? Take this 9, take this 4, make the addition. So answer is going to be 13 over here. Take this one. Answer is going to be 4 here. Try to subtract. Answer will be what? Answer will be what? 13 minus 4, you get answer 9. Here, if you get answer, if answer you get 0 or 11 or multiples of 11, then you can say that this number is divisible by 11 or this number is not at all divisible by 11. So I hope you understood the test of divisibility. 9 came, that does mean this number is not divisible by 11. So this will be odd man out. Let me just give you an example. Let's see here, 2739. Let's see whether this number is divisible. We take these places and then we take this place. I'll write like this. So 9 plus 7 and 2 plus 3. This comes 5 and this comes 60. So if you try to add them, answer will be 22, and 22 is divisible by 11. So this number is divisible by 11. I hope you understood. Go back to your books and learn all tests of divisibility. Take the screenshot so that I'll be able to wipe this off. I hope you understood. So here option number A is going to be the answer because it is not divisible. It cannot be equally divisible among 11 students. Question number 61C. Question number 61C. 1,408 meter barbed wire is used for 4 tons. You need to underline some words. Here the wire is given, barbed wire is given, and there are 4 tons of, and that fencing is around the circular garden. That does mean 1 ton, 2nd, 3rd, and 4th. This is how things are there. Around the garden, 4 turns are made. I hope you are getting it. This is how. Now what is said, 4 electrical poles are installed at equal distance around the garden. Then what would be the equal distance in meter between 2 adjacent poles? So 1, 2, 3, 4. This is how the poles are going to be there. So what are you supposed to do it? There are 4 turns, but we do not want the garden is going to be only just 1 turn, and these are supposed going to be the pillars. Are you getting it? These are going to be the pillars. So what are you supposed to do is this 1,408, you divide it by 4. So you get the fencing for 1 round only. Are you getting it? The fencing for 1 round only, you should be getting it. So answer will be 352, that will be for 1 round. So now we can see that there are 4 poles, 4 electrical poles are there. So 1 part, 2nd, 3rd, and 4th. So there are going to be 4 distances between these poles. So further you can divide 352 divided by 4. Answer is going to be 88 meters. I hope all of you understood how to get that. It is pretty simple. Only as I told you, for paper 1, they will be taking care of your
the 4 fundamental skills: addition, subtraction, multiplication, division. Only number of ways they will be giving you the question. This is the plain and simple question, but many cannot do it just because of the length of the word problems. So please don't fear word problems. Word problems are never difficult. They are easy. Please keep your head cool and try to understand what the question is saying, and then you should be able to solve the question. Let's proceed ahead to next question. Before that, in case if you want to take the screenshot, please do that. And others, please read the 7th question and see if you can do it. Now, question number 7. This is a typical question that definitely you get it for your CTET and your Maha-TET question also. This was again the past question that had come in Maha-TET paper. See here what they said. A purse contains 14,750 rupees in denomination of rupees 100 rupee and 50 rupee notes. Then in the wallet, how many 50 rupee coins, 50 rupee notes can be there? Now, my dear ones, this type of question, if you go and find out, this type of question is basically to be solved by taking variables. You can assume, numbers like 100x plus 50x is equal to 14,750, blah, blah, blah. This is how basically it is solved. I am asking you not to solve like that. Understand one thing, please remember one thing. They give you options. Sometimes you do the smart work. Sometimes, in competitive exams, hard work doesn't always pay you. Sometimes smart works really help you, getting the right question, right answer. Here, if you see, though they have given you the question, they have given you the options also. And there is not a single option that says none of this. So when in the option you don't have none of this, that time grab the opportunity and try to solve with the help of option. That is, again, this is a basic trick many follow to do best in the competitive exam. So here, see what they have said. In person, there are 14,750 rupees. Please remember, I stress on that 50 rupees. And there are 100 rupees, and these are in 100 rupees notes and 50 rupee notes. Getting it? And they are asking you specifically how many 50 rupees notes are there. They are not asking you, how many notes are, how many rupees are there which are in 50 rupees notes. That is not asked. Now here, what you can do is, can you see 14,750? So that one note, you can take it out. Are you getting it? So the remaining amount becomes 14,700. That does mean the remaining amount, the number of notes that you are going to get, that will be even. And this one note that you have kept it aside, if you add that, number is going to be by all means odd number. Are you getting it? So that does mean first catch hold of options, which options are odd numbers. And if you see here, except option number D, all options are odd numbers. So first try to find out answers with the odd numbers. Ignore the even numbers, you can do it later. Let's see how to do that. I don't want to use the variable as I said, I'll be doing with the options. I'm telling you the technique to solve question with the option. You have total rupees 14,750. Are you getting it? Option number A is this is 315. Option number B is 295, and option number 3 is 123, and fourth one is 98. Now let's see here. I need 50 rupees notes. So if I multiply these numbers with 50, I'll get the amount. Let's see. If I do 315, and if suppose my 50 rupees notes are total 50 rupees notes are 315, then exactly they are going to amount to what? So if I do the multiplication, can you see? It will be 15,750, which is by all means not this sum.
This is more than 14,750, and plus we have 100 rupee notes also. So by all means, the first option is not going to come because it's giving me more than some. I need number which is not at all equal to 14,750, but it should be a little bit much lesser than 14,750 because I have 100 rupees notes also. So here 295 multiplied by 50, if you're clever enough, you will say this option also will not come, but even then, let me tell you. So second one comes exactly 14,750, and some students, they mark this answer. Please don't. You have 100 rupee notes also. Sabhi amount 50 rupees notes mein hai kya? Nahi hai, right? The some amount is in 100 rupees, some amount is in 50 rupees, not whole. So this is gone. I told you that even number will not come because of what? It is 50 rupees over here. By all means, answer is third option. But let's see whether you get it. Here, what is going to be the answer? Isn't it? 6150, 123 multiplied by 50, that is 6150. That does mean the remaining amount is possibly 8,000, almost 8,600 something is going to be the answer for the 100 rupees. So 8,600. So exactly divisible by 100. So those are going to be 100 rupee. The amount in 100 rupee notes, and this is the amount it's going to be in 50 rupees notes. What is going to happen here? Let's see here. Answer is going to be 98 multiplied by 50. So it's going to be 4,900. Are you getting it? Now 4,900. Obviously not. You know that there is a 50 rupees note here that we see single one, and here they have the what do you say? Completely even number. So it is not possible. So answer is going to be by all means the third option that you will be getting. I hope you understood how to solve with the help of options. Let's proceed ahead to question number 8. I'm trying my best to give you the background of all the topics that they ask you for TET or CTET exam. Question number 8, once see, cost of 4 3/4 dozen mangoes is 2,280. Then what will be the cost of 9 mangoes? So here they have given you cost of number of mangoes, and from there they are not asking you cost of 1 mango. You would have divided, but they are asking you cost of 9 mangoes. This is what they have done it. Now here, you need to be very smart. 1 dozen में कितने mangoes रहते? There are 12 mangoes, right? Half a dozen में कितने mangoes रहते? There are going to be 6 mangoes. So if I make 4 parts of 12 mangoes, that does mean it is going to be 3, 3, 3, and 3. 3 4s are 12. Are you getting it? That does mean 3/4 is 9 mangoes. Are you getting it? So ultimately, they are asking you the cost of 3/4 dozen mangoes. Are you getting it? And there they have given you cost of 4, and 3/4 dozen mangoes is 2,280. This is what they have asked you. So you need to be really clever finding it. Those who know how to do it, they must have found out the answer by now. Or else, if you don't want to, if you are not, if you do not know exactly 3/4 dozen and all this thing, what you can do is 4 dozens. 4 dozens means you have 48 mangoes, and 3/4 dozens you can find out multiplied by 12 karke. That does mean you're going to have 9 mangoes. So here answer will be 57 mangoes, and 57 mangoes, total 57 mangoes are there, and they will purchase for 2,280 rupees. That does mean cost of a mango. If you want to find out, what you will have to do is divide 2,280 by 57, and you should be getting your answer as
Are you getting it? Then you can say cost of 9 mangoes is going to be 40 multiplied by 9, and answer will be 360 rupees. Option is going to be 360. That is option number B is going to be the right one. Now, generally, I don't teach this kind of thing to my students. We do right over here. 57 mangoes cost you 2,280. So 9 mangoes, how much? So 9 multiplied by 2,280 divided by 57, directly you get answer 360 rupees. So those are the tricks and techniques you need to work it out for yourself. So let's proceed ahead to question number 9th one. Now, this is the question that was asked in the last TET. Even this TET also they asked this type of question. Let's see here. 210-meter rope was folded in half to cut into equal parts. Now understand, there was a rope. So I'll say that this is how the rope, and it was folded in half. Can you see this is how it is folded in half? Now, then the rope was cut at 3 places. Then it was cut at 3 places. Now, what is the length of each piece of the rope? Can you guys give me answer? Can you put it into the chat box and let me know what could be the answer of it? What could be the answer? Is it? Let's say, aren't we making some problems? Okay. It's not surprising that you're getting wrong answer because of the certain concept. Let's see here. This is the rope. What is said? The whole rope is 210 meter, and it is folded. Please remember one thing. You need to know the exact meaning of the word. It is said folded. It is not said it is cut. It is folded over here. Can you see it is not cut here? This is a fold over here. I'm repeating it. This is a fold over here, not cut. Now, if it is cut at 3 places, so let me cut 1. Are you reading it? 2, and this is the 3 places. You understood? I gave this cut. Here I cut. After folding, these are the cuts I gave. How many parts did I get? Part number 1, part number 2, part number 3. This is part number 4, 5, 6, and these are 7 parts. I got it. Are you getting it? I did not get 8 parts because this is a fold. So after stretching it, it is going to be the 1 part, not 2 parts. Please remember that. Now it is folded in half. 3 cuts are given. That does mean we are going to get 3 pieces of the rope. Therefore, we have the length that is 210 divided by 7. We do it. We are going to get 30 meter. Are you getting it? We are going to get 1 part equal to 30 meter. Are you getting it? So that does mean, but in the options you don't have, yes, exactly. When you don't have 30 meter, so here they are going to check your measurement skills also. You should know that, 1 meter is equal to how many centimeters? So 100 centimeter. So answer is going to be more, you are going to add. So it's going to be 300, 3,000 centimeter. This is what is going to be your right answer. I hope you understood this. Please remember this. Many students made mistakes over here in the exam. Fold bola means आप actually ऐसा करके रखो. Draw the line and then it will be happening. Just don't count it like. I hope you got it. Move ahead to the next question. So until now, we have seen questions related to all the things. I hope you have taken the screenshot. Let me proceed ahead.
Let's see the question number 10. I'm not going to, I will not be able to finish exactly by 4. We are going to take 2-3 minutes more, not more than that. I apologize for that. Let's see the question number 10 one. 4 years ago, total of Sumit's age and Raju's was 31 years. If Sumit is 3 years younger than Raju, and then after 5 years, what will be Raju's age? Now, this is the question on ages, problem on ages, and by all means, you have at least TET, Maha TET, they definitely ask you one question on this topic. So please don't ignore this topic. Do this topic very thoroughly, very thoroughly. So here, how are you going to do it? Can somebody tell me the answer? How do you get it? 4 years ago, total of Sumit's age and Raju's age was 31 years. So you can assume Sumit's age as S, Raju's age as R. So S plus R, you can say that 31 years. Then if Sumit's age, Sumit is 3 years younger than Raju, after 5 years, what will be the Raju's age? So how to solve this type of question? Yes, but after 5 years, Mahesh, 21 you got it, but they have said after 5 years. So what would be the age? Find out that. Question number 10, see. We assume Sumit as S, Raju as R. Now they have said that 4 years ago, at this moment, so present ages, if we assume that S and R, then 4 years ago, they were like this, and the addition was 31 years. Did you, I hope you got it, why I did S minus 4 and R minus 4, because the question clearly says that 4 years ago. So if they are the present ages now, so you need to subtract the their things. Just give me a moment. Now see here. After that, what is said, if Sumit is 3 years younger than Raju, Sumit is 3 years younger than Raju, this is what they have said. So how are we going to do it? Can somebody tell me? How are we going to do it? See, this 4S plus R, can we say here minus 8 is equal to 31. So S plus R is going to be 39. Am I right? I hope you understood this. This is what we got the answer. Now it says, if Sumit is 3 years younger than Raju, if Sumit is 3 years younger than Raju, I'm reading it. If Sumit is younger than Raju, if I put the value like this, can you see? Raju could be Sumit's age plus 3. This is the Raju, right? Can I say, after substituting, I can say that again the answer will be 39. I hope you are getting it now. So 2S plus 3 is equal to 39. So S is equal to 36 divided by 2. So S is equal to 18. I hope you got it. This is how you can solve it, plain and simple way. Only thing you should know how to substitute. There is other way around also, that way also you can do it. Now you need to find out their ages. We saw that R is Sumita age plus 3. This is what we understood. So R is S plus 3. So R is going to be 18 plus 3. That does mean 21. After 5 years, that does mean 21 plus 5. You are going to get the answer 26.
So answer will be 26. That is option number D is going to be your answer. Any doubts, you can ask me. Take the screenshot if you wish to. ये कहाँ से आया? Because Sumit is what? Sumit is 3 years younger than Raju. So that's why Raju is Sumit ka age plus 3. This is how I took it. And after taking the values, we got this answer. Let's proceed ahead to question number 11. Question number 11, let's see. Yeah, okay, Pranay, let's see. What will come in place of question mark 26? This is the question on series. This type of topic we teach students when they are in 6th or 7th standard, when we teach them algebra. Before algebra, we teach them term rules. So this question is related to term rules. And by all means, in Maha TET, they definitely ask you this question. And this is the past, this is from the past paper. So please, on the question on series, please don't ignore. Try to do your questions. 42 question mark and 156. This is what they have given you. Now see here. Here they have given you options 72, 90, 110, 132, and Pranay has already said the right answer, that is option number C. My dear, absolutely correct. How it is? See here. 2 squared minus 2. If I do answer, I get as 2. 2 squared is 4, minus 2 is answer is 2. Then 3 squared minus, I'm sorry, 3 squared. 3 squared minus 3, if I do it, I'll get answer 6. That is 9 minus 3, I will get answer 6. Then here you have 5 squared. 5 square minus 5, that is 25 minus 5, you are going to get answer 20. Here you have 7 square minus 7, that is series is n square minus n. This is how the series is going. 7 square is 49 minus 7, you get answer like this. So it is obviously, you see, this series is of prime numbers. Why prime numbers? Because it is starting with 2. These are odd numbers, but this is even number. And guys, you need to understand, there is only one even number, that is 2 in prime numbers. There is no other even number in prime numbers. It cannot be there. Only 2 is the only even number that is prime number also. So after 7, 9 would come or 11 would come. So obviously 11 would come. So answer is going to be 11 squared minus 11, that is 121. Minus 11, answer is, as you guys rightly said, answer is going to be 110. I hope you got it. Then answer for this one is going to be 13 squared minus 13. So you're going to get answer 156. That is 169 minus 13. You will get answer 156. So this is how the rule is there. N is equal to prime number. Need to understand that. Now, the last question that we are taking, that is, they are going to give you question like this. I'm sorry, I think there is some typing mistake over here. Please correct them the way I'm doing it. This is how the question is: x squared minus 10x is upon your this x minus 6. So if you try to solve this, your answer should be, answer should be like x is equal to 4 or something. So yes, answer is going to be 4. You know how to do it is like
you get 24 over here, and 6 4s is 24. So x minus 6 and x minus 4. This is how you get it. X minus 6, x minus 6 jayega. Answer will be x minus 4. If you want, I'll just do it. Minus sign is there. So this is how you are going to get the answer. Here it is going to be your x. And so you're going to x square is there. So you're going to take it out. This is how you will be doing it. So it's going to be this will be going, so answer will be x minus 4. So x is equal to 4. This is how the answer is going to be. So this was, you can take the screenshot if you want. There would be definitely few questions on your math pedagogy, like how you will teach the problem solving techniques. If you have a student who has some learning disability, then how you will make him understand the fractions and decimals. Those students, they find this difficult to understand. So what strategies you will help them out? Modern technologies to use in your classroom, what they could be your direct method, indirect method of teaching mathematics. So all these things will be included in your pedagogy. Please don't throw the notes of your B.Ed math pedagogy. Keep them. Keep it with you. Those will be useful. You have done that in college thoroughly, and please don't give away those things. When you want to give your TET and CTET, that time you can definitely ask. Mahesh, I think you want to ask me something. You have raised the hand. Mahesh, have you raised the hand? Yes. Or you can put it into the chat box. Either you can unmute yourself and tell me. Shall I ignore, or you're talking to me? I guess that's it. What I'll do is I'll stop the share, and sir will be talking to you. Yeah, good evening once again. Now, you see, we tried to give you a bird's eye view and a bird's eye view of TET. I know that it's very difficult to cover everything in such a short span, but the whole idea was to tell you what syllabus is there and how we can go about and prepare thoroughly. This is not too difficult an exam, but don't take it too lightly, because as I just mentioned in my session that this is a very mandatory examination, and without that your approval will not come. You will not be permitted to teach. That's the basic thing. In all boards, all medium and government has taken it very strictly. It's a good idea to prepare for this examination while you are doing it. And as very rightly pointed out by Madam, you see to it that you keep the notes and keep revising. Look at the content, the syllabus, and also the past question papers, and keep doing it. I'm quite sure you'll be able to crack this examination. Now, upcoming CTET and exam CTET that you give, if you are eligible, CTET that you give the examination. A lot of mock tests are available on websites. A lot of videos are available on YouTube. You can take benefit of it. And if you need any help, we do offer online preparatory coaching and all. You can definitely talk to us. And all the best for your examination and for your future career as teachers. You have a very vital role to play. Thank you very much. I take this opportunity to thank our principal and Vaishali Madam for Dhaure Madam for arranging this particular seminar. So if you have any questions, please do ask. You can unmute yourself and ask the question, or you can put it in the chat box also. Please, if you have any questions, we will be happy to answer. Any questions, please? Yes, good evening, sir. Yes. Yes, I can hear you. Am I audible? Yes, you are audible. Please.
Do you all have any questions? सर एक क्वेश्चन आहे सर. हा बोला ना. मी काय म्हणतोय, जर आम्ही सीटेट दिलेली असेल तर मग महाटेट देणं गरजेचं आहे का? जनरली असं मी म्हणजे बऱ्याच शाळांतून फीडबॅक आहे की ज्यांनी सीटेट केलेली आहे क्लिअर, त्यांना दोघातली एक, जर तुम्ही नोटिफिकेशन पाहिलं तर एक तर सीटेट किंवा एक महाटेट हवी. पण सीटेट दिले असेल तर काही ठिकाणी अप्रुव्हल साठी माझ्या काही स्टुडंट्सना ते एक्सेप्ट केलेलं आहे. तरी सुद्धा तुम्ही जेव्हा अप्रुव्हल साठी कराल तेव्हा तुमच्या स्कूल मधून ते जरा कन्फर्म करा. पण जनरली इट इज एक्सेप्टेड, म्हणजे काही स्टुडंटच्या बाबत ते एक्सेप्ट झालेलं आहे, त्यामुळे त्यांना अप्रुव्हलला काही इश्यू आलेला नाही. सर दुसरा डाऊट हा आहे की सर इन केस समजा जर मी ज्युनियर कॉलेजला जर शिकवतोय तर मग मला टीईटी देणं गरजेचं आहे का? नाही, अजून तरी ज्युनियर कॉलेजला हा प्रश्न आलेला नाही. फर्स्ट टू 8th स्टँडर्ड पर्यंतच ही रिक्वायरमेंट आहे, इव्हन 9th-10th ला नाहीये. पण आता लवकरच त्याच्यासाठी सुद्धा गव्हर्नमेंटने हिंट दिलेली आहे की हे आवश्यक आहे म्हणून. ही परीक्षा हीच एक्झाम असणार आहे की दुसरी एक्झाम? नाही, ती त्याचं स्वरूप ते निश्चित चेंज करतील. या टाईपचीच असेल, म्हणजे क्वेश्चन्स तुमच्या पॅडॉलॉजीवरती, सायकोलॉजीवरती वगैरे असतीलच, पण थोडा कॉन्टेंट चेंज होईल. थोडी कॉन्टेंट ओरिएंटेड एक्झाम असते ती, कारण ज्युनियर कॉलेजचे स्टुडंट्स थोडस वेगळं असतं स्कूलपेक्षा. त्यामुळे मला वाटतं त्याचा काहीतरी स्पेसिफिक सिलेबस ठेवतील. पण गव्हर्नमेंटने ऑलरेडी ती हिंट दिलेली आहे की अगदी 9वी 10वी आणि 11th-12th ला सुद्धा अशा परीक्षेचे प्रकारची शिक्षक पात्रता किंवा व्याख्याता पात्रता परीक्षा असणार आहे. थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, असेल तर विचारा. No, sir, no questions anymore. Okay, so thank you very much. It was a pleasure talking to you, and we'll be happy to help in whatever ways possible. Thank you very much. Thank you. So shall I end the session from my side? Just a second, vote of thanks, and then we'll end the session. Yes, yes. Okay. Gratitude is one of the least articulate of the emotions, especially when it is deep. Good evening, respected ma'am, teachers, and my dear friends. So we have reached the end of this beautiful session. Today, I, Ms. Haley Sayya, take this opportunity to put my gratitude into words. It is my pleasure for me to end such a beautiful program with a vote of thanks. On behalf of Gandhi Section Bhavan and all the students, I would like to extend my heartiest thanks to Prakash Almeida sir and Anita Almeida ma'am for their presence in the sessions, who spared their time from their busy schedule to grace the occasion. Thank you, sir and ma'am, for enlightening us with your inspiring and motivating words, and for your experience and the knowledge that you shared with us. You are an extraordinary person, and we are here to thank you with full of gratitude. Thank you. Thank you. All the best. Do well. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Do well. You have all best wishes, and thank once again. I think we had been to your college, and this is, I think, twice or thrice we are taking this session. So we'll be there to help you out. Thank you, and all the best once again. Sir, I'll end the session here. Madam, Dhavre madam, this session end करतो इकडे.